Hello there, I'm Hartaj from New Careers. As we did our Polity first lecture, we did the first part of the Union Executive. In the second part of the Union Executive, I'll be explaining various types of bills to you. What is the process of the bill? And to add to that, we'll be adding the annual financial statement, which is called the budget. How the budget proceeds, how it is getting done, entire process will be explained to you. UPSC papers, you would see a lot of questions on committees. And we've done a very fine and research work for this. We've given examples in each committee. And this will, as I promise you, you will not find this lecture in any of the books. So give your best, do it properly, and I promise you all questions of your UPSC will be covered in this lecture. What I'm going to go through in this lecture is basically do the short notes. 1 second. View. Okay. We are going to start with legislative procedures in the parliament. So what we mean by legislative procedure, कैसे parliament से कोई bill pass होता है, open your registers and then I'll tell you, and including your that thing, because certain things are not added in your notes. This is extra information I'll be doing. बहुत सिंपल प्रोसीजर है. हम सीखेंगे पार्लियामेंट में कोई भी चीज कैसे पास होती है, उसके डिफरेंट प्रोसेसेस क्या हैं. सबसे पहले तो बात करते हैं बहुत सिंपल चीज, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है. लॉ मेकिंग. इंडिया में लॉज कैसे बनते हैं, भारत में लॉज कैसे बनते हैं, उसकी बात करेंगे. लॉज बनने का एक ही तरीका है, हमें क्या करना पड़ेगा. बिल, वी प्रपोज अ बिल इन द पार्लियामेंट, व्हेन इट इज सिलेक्टेड, और जब प्रेसिडेंट साइन कर देगा, इट नाउ बिकम्स अ लॉ. जब तक साइन नहीं होता तब तक वो क्या रहेगा, इट्स अ बिल. बिल, लॉ, एक्ट, फिएट, ये सब क्या है, व्हेन इट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट पास करके सिग्नेचर करने किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास. अगर वो साइन कर देता है तभी वो चीज काउंट होगी, नहीं तो वो काउंट नहीं होती. उससे पहले क्या आएगा, बिल. बिल के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं. बिल से क्या बन सकता है, रूल बन सकता है, एक्ट बन सकता है, लॉ बन सकता है, फिएट बन सकता है, आपका कोई भी बॉडी बन सकता है. तो ये सब, या स्टैट्यूटरी बॉडी जिसे बोलते हैं, ये लिख लो. लॉ बनेगा कब, पहले बिल जाएगा. बिल व्हेन इट इज अप्रूव्ड, टिक करके क्या लिख दो, प्रेसिडेंट अगर कर देगा. ये सब टर्म्स हैं उसकी. क्लियर हो ना, ये सब क्या है, टर्म्स. हमारे को एक शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूँ, सो दैट यू आर एबल टू रिवाइज व्हेन यू आर डूइंग इट. सो टिल द टाइम मैंने पार्लियामेंट में गया, मैंने बोला कि लिसन, आई वांट टू स्टार्ट विद समथिंग. सेकेंडली हमें पता लगा कि हमारे पास 4 टाइप्स के बिल्स होते हैं. एक होता है ऑर्डिनरी बिल. ऑर्डिनरी बिल क्या है, एक एग्जांपल कोई बता सकता है, मोटर व्हीकल एक्ट. अब इसमें लिख लो 4. फर्स्ट ऑर्डिनरी, सेकंड फाइनेंशियल, थर्ड मनी, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन. टाइप्स ऑफ बिल्स. टाइप्स ऑफ बिल्स में 1 2 3 4 लिख लो. इसको हमने फर्दर डिफाइन करेंगे, बताता हूँ कैसे. ऑर्डिनरी बिल एग्जांपल क्या हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट. इसके अंदर मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर हमने बोल दिया कि देयर आर सर्टेन चेंजेस वी ब्रॉट अबाउट. एग्जांपल दे रहा हूँ, एमबीए एक्ट के अंदर हमने बोला कि एक और था एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट. ये सब क्या, ऑर्डिनरी बिल्स. इसमें संविधान नहीं चेंज हुआ, सिंपल बिल हुआ. क्लियर और नॉट. मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें क्या बोल दिया कि आपके चलान महंगे होंगे. सेकेंड ऑफ ऑल, आइडेंटिफाइंग प्लेसेस, जहां जहां पे चला एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना. ये क्या हो गया आपका ऑर्डिनरी बिल. सेकंड आया आपका मनी बिल, जो आर्टिकल 110 में गिवन है. कौन से आर्टिकल में गिवन है, 110. ऑर्डिनरी बिल मैं नोट्स बनाऊंगा तो मैं ऐसे कर दूंगा, 110 मनी बिल. थर्ड कौन सा हो गया, फाइनेंशियल बिल. कौन सा हो गया, 117 1 एंड 117 2. तो मैं यहां से थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ. 100 एंड जो मनी बिल है ये लोकसभा में ही स्टार्ट होता है. फाइनेंशियल बिल भी किस में होता है, लोकसभा में ही स्टार्ट. एलएस का मतलब क्या है, इट स्टार्ट्स इन लोकसभा. ऑर्डिनरी बिल का मतलब क्या है, एलएस प्लस आरएस. इट कैन स्टार्ट इधर इन लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा प्लस राज्यसभा. इज इट क्लियर और नॉट. व्हाट्स माय फोर्थ टाइप ऑफ बिल,
संविधान को चेंज करने वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. इट कैन ओरिजिनेट बोथ इन लोकसभा और राज्यसभा. आर्टिकल 370 स्टार्ट कहाँ पे हुआ था? राज्यसभा. आर्टिकल 370 अगर हुआ था, इट स्टार्टेड इन राज्यसभा. इट कैन स्टार्ट इधर इन लोकसभा और राज्यसभा. एक और आगे सिग्नेचर कर देंगे. प्रेसिडेंट सिग्नेचर रिक्वायर्ड, पी सिग्नेचर रिक्वायर्ड, पी सिग्नेचर रिक्वायर्ड, पी सिग्नेचर रिक्वायर्ड. मतलब कि ये बिल स्टार्ट करने के लिए पहले किसका सिग्नेचर चाहिए? प्रेसिडेंट का. इंट्रोड्यूस. जैसे क्लियर? हमारे को ये चीजें पता लगी, 4 टाइप्स के बिल है. उसके अंदर अपने शॉर्ट नोट्स, ये आगे से ये आना है, पर इतने में मेरा सारा का सारा शॉर्ट नोट्स कवर होता है. So when you're revising, you don't have to go through this again. You make short notes for it. Yes. So you will have to go through the short notes like this. Is it clear? I'm just helping you making short notes. So if I was in your position, I don't go through it. I go through it once, and after that, that's it. My short notes are the ones that are working for me. So don't make it too long. ये बड़े लिखने की जरूरत नहीं है. OB समझ आना चाहिए. What is that? Ordinary bill. What is MB? Money bill. What's FB? Financial bill. What's FB? Financial bill. What is CAB? Constitutional Amendment Bill. Now, Constitutional Amendment Bill can have different types. First, simple majority. Second, ratification by 50% states. Example दे देते हैं हम GST का, जहां पे states का right. एक एग्जांपल इस बार क्वेश्चन आया था फेडरल स्ट्रक्चर को. आई शो यू द पेपर. कल नहीं परसों हम ये पेपर्स के साथ एमसीक्यूज के साथ करेंगे, जहां पे भी फेडरल स्ट्रक्चर. फेडरल क्या होता है? स्टेट. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल स्ट्रक्चर्स. यूनिटरी मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल मींस स्टेट्स. तो दोनों कोहेजन में चलते हैं. जहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर छीननी हो या कम करनी हो, उसके लिए क्या चाहिए? रैटिफिकेशन बाय 50% स्टेट. रैट प्लस 50% स्टेट. रैट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रैटिफिकेशन. शॉर्ट नोट्स हो गए. जो आपके नोट्स में 10 पेज का होगा, वही कितने में आ गया? 5 में. बट अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, दिस विल बी अ थिंग. सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर यू. इज इट क्लियर और नॉट? Ratification by how much? 50% state. There are two types of constitutional amendment. Article 370 में हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए थी. Is it clear? हमें कुछ वो नहीं चाहिए था कि 50% प्लस स्टेट्स होनी चाहिए. अब कॉन्स्टिट्यूशन को एक टर्म बोला गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड. फ्लेक्सिबल क्यों? कई बार सिंपल मेजोरिटी चाहिए. रिजिड क्यों? कई बार 50% ratification of states भी चाहिए. Certain things cannot be changed, whereas certain things can be changed very easily. So what is the term for it? लिख लो. Indian constitution is also called, is flexible at the same time very rigid. The Indian constitution is flexible as well as rigid. The Indian constitution is flexible as well as rigid at the same time. Why do we call it flexible? कई चीजों में तो बहुत सिंपल मेजोरिटी चाहिए, कईयों में बहुत ज्यादा चाहिए. तो कहीं पे फेडरल स्ट्रक्चर चेंज होएगा, फेडरल क्या है? स्टेट्स की पावर कम होंगी. तो व्हाट डू वी हैव? रैटिफिकेशन बाय हाफ द स्टेट्स. दिस इज जस्ट दिस पोर्शन, बट आई एम गिविंग एक्स्ट्रा व्हिच इज गोइंग टू कम फॉरवर्ड. पहले तो ये हो गया. क्लियर है कि नहीं? अब आया दो टाइप्स के और बिल होते हैं. When a government introduces a bill, it's called a government bill. The chances of it getting rejected are very less because government is introducing it. A private member bill, any MP can introduce a bill by itself. It's called a private member bill. कोई भी MP अपने आप से कोई बिल इंट्रोड्यूस करे, उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट मेंबर बिल. Can you give me example of any private member bill which became a legislation or a law? कोई ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो जहां पे प्राइवेट मेंबर बिल कोई लॉ बन जाए? बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. रिजर्वेशन नहीं, प्राइवेट मेंबर बिल. एक एमपी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इंट्रोड्यूस दिस बिल, और वो फाइनली वो बिल पास हो गया और लॉ बन चुका है. एनी सच बिल? हाँ जी, भारतीय नागरिकों. यस, citizens of India. What is your opinion? What do you think it happened? It was for somebody. When we say, okay, now hint for you. It is not for you. It is not for the girls. It's not for the boys. For who was this bill? Third gender.
transgender. So the last time a private member bill got passed was for a transgender. Why are you looking at him? Okay, is it clear or not? So, okay, so this is the case. Government bill, a bill which was passed by the government, more likely chances to get through. What's the second bill? Private member. What's the second bill that we have? Private member. What's the last private member bill which got passed to? Transgender. So my entire thing is done till here. Again, I'm repeating. Let's revise it through. There are four types of bills that we have. Money bill. What is money bill? Article 110. We are going to discuss it only by Lok Sabha. Who allows it? Speaker. President's signature is required, and the president can either reject it or pass it. There is no other option. इसके आगे एक और लिख लो. President टिक तो कर दिया. One second. President टिक कर दिया. इसके आगे एक और चीज लिख लो. President can either reject it or pass it. एक ऐसा बिल है जो सिर्फ प्रेसिडेंट पास करना ही पड़ेगा. वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. बाकी सब बिल्स पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स है. टिक क्रॉस इक्वल टू. ये शॉर्ट फॉर्म्स में मैं करता हूँ. दैट्स हाउ आई डू इट. टिक मींस पासिंग, क्रॉस मींस rejecting, equal means sending it back for reconsideration. So that is what it means. जो भी है नीचे शॉर्ट नोट्स में लिख दो. इसका मतलब क्या है? पास. इसका मतलब क्या है? रिजेक्ट. इसका मतलब क्या है? reconsideration. So on a single page you made a notes of exact one page. That's how the short notes are made. Any doubts with this? Point out? Yes. Ordinary bill. It's ordinary bill. It cannot be a financial bill. ऐसा तो नहीं देना. It is to recognize and give them rights. So it does not require any other thing. Similarly, one more thing I would like to add. JS, joint session, can only happen in ordinary bill and financial bill 1 and financial bill 2. JS also, write it down. Joint session. Clear or not? This is the entire thing. Iske beyond nahi aa sakta. Clear? Two types of bills we have. First is government or private. The last private member bill to get through, last chamber. Now we come to how the bills are passed. It's called the first reading of the bill. So either I take the leave of the house, I'm an MP, I can introduce a bill in Lok Sabha and Rajya Sabha. Which bills can be only introduced in Lok Sabha? Money bill. Also financial bill 1. Financial bill 2 can happen in both Lok Sabha and Rajya Sabha. But financial bill 1 can happen only in this case. I take the permission of the presiding officer, and if the permission is allowed, I only read two things: title and objectives. Write down. FR, first reading. What is the first reading? What is the first reading consisting of? Title and objectives. What's the first reading? Title and objectives. What would be my first reading all about? First reading, title and objective. Is it clear or not? What's the first reading? Title and objective. Is it clear? जो ये सब दिखा हुआ है सब मैंने I don't have to read it because we've already done it in the starting. Short notes I've already made it. What is the first reading? Only two things you have to remember: title and objective. Or you ask for a leave. Second thing that uses ask for a leave. And first you ask for a leave and tell title and objective. What's the other thing? It already gets printed in Gazette of India. दो चीजें हो सकती है, या तो ऑलरेडी गजेट ऑफ इंडिया में छप जाएगा बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन ऑल्सो. सेकेंड इज आपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोला सर आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ बिल. द टाइटल ऑफ द बिल इज दिस एंड ऑब्जेक्टिव इज दिस. बस. You are not telling anything in detail because the bill will then get printed in Gazette of India. Then it goes to all MPs. पढ़ने के लिए बिल जाएगा. आपको सिर्फ क्या बताना है, क्या उसका टाइटल है और उससे आप क्या अचीव करना चाहते हो. That's the first reading of the bill. Now it gets printed in Gazette of India. After it gets printed in the Gazette of India, that is when the second reading comes into. Ask for a leave, as in like
Please, can I take permission to speak? I want to introduce this bill. That's what it means asking for a leave. That's what it means by asking for a leave. Any doubts with this? Simple, no? First reading done. What do we have? The second reading. In the second reading, there'll be general discussion. Suppose it was the transgender bill. Why we need to introduce it? Look at the world around us. What are they doing? So there's a discussion on the bill. What happens in second reading? Discussion. It may be referred to a joint committee or a select committee. Now, what's the difference between joint committee and a select committee? Joint is both Lok Sabha plus Rajya Sabha, whereas select committee is only one house. It will be either Lok Sabha or Rajya Sabha. Is it clear? What's another thing that we have? It could be given to people opinion. लोगों को बोल सकते हैं आप opinion दो. There are bills. If you go on Lok Sabha Rajya Sabha site, there is written public opinion. You can give your opinion about the bill. Clear? We can give our opinion. Or what else I can do? I can discuss on the bill. First is discussion. वो बोलता है नहीं 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 कोई ऐसा अभी recent bill जो select committee के पास गया हो. कोई ऐसा bill जो अभी recently select committee के पास गया हो. Can you think of any such bill which has gone to a select committee for discussion? The government was on the back foot. The government didn't want to push it through initially, and they decided to give it to this. The example is Waqf bill also. Waqf bill was first sent to a select committee. एक single house के लिए की थी. Sorry, what is Waqf bill? Anyone? Waqf is when I give my property. Somebody says I give my property for charitable purposes, which will be used by the board for charitable, education, whatever. Public use. That is what we say Waqf bill. उसके अंदर होता है अभी cases going on because any law can be challenged in court also. Is it clear? Any law can be challenged in court. अगर court stay लगा दे, that means law is for some time on a hold. Court stay ना लगाए और बोले कि चलते रहेगा, then we will see to it. That's also way. Is it clear? अब third reading में क्या होएगा? Simple सी बात है. Select committee के बाद आ गया. It is now either rejected or passed. Third reading में क्या होता है? Rejected or passed. Now, what's the difference between simple majority और special majority? Step by step. जैसे कि उन्होंने बोला कि जैसे अभी वक्फ बोर्ड की बता रहा हूँ, ऑपोजिशन बोलता है नहीं नहीं ये पोर्शन गलत है, ये अमेंडमेंट नहीं आनी चाहिए. उनका तो माना नहीं, जो गवर्नमेंट ने बोला था अमेंडमेंट वो आ गया. इज इट क्लियर और नॉट? सो दैट इज डिस्कशन और फिर क्या हो जाएगा? सीधा पास. इधर रिजेक्ट और फेल. यस. ये जो अभी हम फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग कर रहे हैं, ये हर एक बिल के लिए एप्लीकेबल हो रहा है या सिर्फ अमेंडमेंट वाले बिल? हर एक बिल्स के लिए, हर एक बिल्स के लिए. फाइनेंशियल बिल जो आ रहा है, मनी बिल, ये भी पब्लिक ओपिनियन के लिए जाता है? यस यस. फाइनेंशियल बिल जो मनी बिल है वो तो वैसे ही लोकसभा के पावर है, राज्यसभा से कोई पावर ही नहीं है उस केस में. जनरली कहीं पे भी कमेटी बैठ जाएगी ना, सिलेक्ट कमेटी और जॉइंट कमेटी, वहां पे क्या आएगा? देयर विल बी अ केस ऑफ अ discussion. After that, it's also given for public opinion. It may be given for public opinion. It's not guaranteed. It may be given. Your opinion may or may not be accepted also. It's also a fact. It's not that the government is bound to listen to your opinion. Clear? Right. Okay. So it is just to say that where people as a civil society were contributing towards the lawmaking process. Third reading is in right now, it's in the parliament. It's not gone to the president. It is in the parliament only. Now, whatever house the bill was, discussion happens and then it's either selected or rejected. Now, there are two types of majority, simple majority and special majority. What's the difference between simple and absolute majority? Simple majority means 50% plus one voting or present strength. Example है, majority of members present and voting. 50% of members present and voting. Present. What's the strength of Lok Sabha? 440 आए, 221 ने वोट फेवर में कर दिया, बिल इज पास. इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी. आज सिर्फ 440 मेंबर्स थे, तो जितने आपके अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, सपोज
कहीं नहीं है, अभी छुट्टी पे है, तो हमने क्या बोलेंगे, हम इन्हीं में वोटिंग कर लेंगे। अगर 50% +1 हो गया, माई बिल इज, दैट्स व्हाट सिंपल मेजोरिटी मींस। इज इट क्लियर? द नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, व्हाट्स कोरम, मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी चाहिए? 110। तो 55 तो चाहिए ना, अगर नहीं होंगे तो बिल पास नहीं होएगा। सिंपल मेजोरिटी सिंपल है ना, सिंपल मेजोरिटीज जो आए हैं, क्या याद करना है, द पीपल ऑफ कम, उसमें वोटिंग हो जाएगी, 50% +1 है तो क्या हो गया, सिंपल मेजोरिटी। दोनों में डिफरेंस देख लो, सिंपल है। इसको सिंपल याद करने का तरीका मैथ्स में याद रखो, मैं तो मैथ्स से याद किया। 555 स्ट्रेंथ है, 545 स्ट्रेंथ है, कितने है, 440, तो पास द बिल वी रिक्वायर 221। एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज द केस जैसे गवर्नमेंट बनती है। व्हाट्स द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? 545। तो गवर्नमेंट को अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए कितने मेंबर चाहिए? एब्सोल्यूट का मतलब होता है हाउ गवर्नमेंट प्रूव्स इट्स स्ट्रेंथ। 50% of the total strength of the house. Is it clear? 50% of the total strength of the house. Minimum members present कितने होने चाहिए? 2/3। 2/3 का present and voting. More than 50% total membership. Is it clear or not? तो अभी strength क्या हो जाएगी? 2/3 of the people should be present also for voting. If 545 का 2/3 members should be present for voting, or they should be sitting there. They can abstain. But when discussion happens, this is what the case of it. Is it clear or not? This is the simple majority used in passing ordinary bills, no confidence or confidence motion or adjournment or other motion. इसमें क्या लगता है आपका? सिंपल मेजोरिटी। नो कॉन्फिडेंस पास करने के लिए क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी, नॉट एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये क्लियर हो गया, सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है? एनी डाउट्स? सिंपल इज जितने लोग आए हैं, जितने प्रेजेंट है उसमें से 50% +1। एब्सोल्यूट क्या है? इस क्लास की स्ट्रेंथ अगर 100 है तो 51 को तो वोट करना ही पड़ेगा, चाहे आज 60 लोग आए हैं, 60 का 31 ही होएगा, 60 में से 51 मेरे को चाहिए फॉर एब्सोल्यूट मेजोरिटी टू प्रूव इट। Favor, that's it. Is it clear? Basically means how the government works. Okay, let's continue further. 2/3. This is the case of special majority. Requires majority of the membership and 2/3 of the members present and voting in each house. Special majority. 2/3 members present and voting. That is for special majority. Is it clear? एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है स्पेशल, एक होता है सिंपल मेजोरिटी। पैसेज ऑफ बिल, फर्स्ट बिल में पास हो गया। बिल का इंट्रोडक्शन क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या था? फिर से रिपीट, आपने नोट्स में लिखा हुआ फर्स्ट इज फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव। फिर क्या हुआ? फिर सेकंड इज बिल छपता है गजेट ऑफ इंडिया में, हर किसी के पास जाएगा। लिसन एवरीवन, इफ यू आर एन एमपी, थिंक ऑफ एज एन एमपी, each one of you will get a copy of this bill. It's published in Gazette of India. You will read the bill, then you will go and say, okay, I don't agree with the bill. हमें ये बिल पसंद नहीं है, हमें ये बिल पसंद है। अब पार्लियामेंटेरियंस अगर एजुकेटेड नहीं होंगे, हाउ वुड दे हैव अ डिस्कशन ऑन द बिल? मोदी जी ने बोला मस्त है, बहुत अच्छा बिल है, दूसरा कहता है राहुल गांधी ने बोल दिया अच्छा बिल नहीं है, नहीं अच्छा है। So rather than your own debates, you will only have a debate if you understand the bill. That's why it's published in Gazette of India. After that, if there is a doubt, it goes to a select committee. Select committee means single house. Joint committee means both the houses. Discussion like वक्फ बोर्ड हुआ, उसके बाद पब्लिक ओपिनियन भी आ सकता है। What's the थर्ड में क्या होगा? या तो पास करो या रिजेक्ट करो। पास हो गया, now it goes to the other house. तो हमने बोला बिल पास बाय अदर हाउस, now goes to the second house. Suppose वक्फ बोर्ड का ही लेके चलते हैं, ये गया सेकंड हाउस में। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो सेकंड हाउस बोलेगा चलो पास कर दो, मेरे को पसंद है। सेकंड हाउस बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे को अमेंडमेंट चाहिए, ये चीजें ऐड करो। देन इट अगेन गोज बैक टू द फर्स्ट हाउस। ओनली किस केस में हो सकता है? Yes or no? Remember what I said? Amendments can only happen. Where can joint session happen? Ordinary bill, financial bill 1, financial bill 2. मैंने स्टार्टिंग में जो कराया था उसी से सब रिलेटेड हो रहा है। क्लियर और नॉट? सेकंड हैपेंस, वो कहता है नहीं 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 नहीं, we want an amendment. It goes back to the first house. The first house doesn't agree. If it doesn't agree, what happens then? Joint session, Article 100 and
Is it clear? The first house passed the bill. Now it goes to the second house. Second house says, I pass the bill, automatically gets passed. It goes now to the president. First case. Second case, passes an amendment and sends it back to the first house. First house accepts the amendment, automatically goes to the president. Does not accept, then what happens? Does not accept, then what happens? Joint session. Simple. इसमें कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं, सिंपल बेसिक लॉजिक चल रहा है. इज इट क्लियर और नॉट? अगर एक्सेप्ट करेगा तो फिर तो सीधा पास हो गया. अगर नहीं एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा? जॉइंट सेशन. जॉइंट सेशन कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर. अगर स्पीकर नहीं है, स्पीकर कहता मैं तो थका हूं भाई, डेप्यूटी स्पीकर. इफ नॉट डेप्यूटी स्पीकर देन वाइस चेयरमैन. पहले तो आएगा राज्यसभा का, देन सीनियर मोस्ट. सो वो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऊपर रखा गया है. तो व्हाट इट शोज, क्या दिखाता है? लोकसभा हैज ब्रूट्स. लोकसभा की स्ट्रेंथ भी ज्यादा है. तो जो लोकसभा की बिल थी, अगर लोकसभा ने बिल पास किया था तो पास होगा. अगर लोकसभा ने बिल रिजेक्ट किया था तो रिजेक्ट होगा. सिंपल सी बात है. एनी डाउट्स विद दिस? टेक नो एक्शन, बिल रिमेन्स पेंडिंग. ओके. राज्यसभा में मनी बिल, राज्यसभा अपने पास कितने दिन रख सकता है? हाउ मेनी डेज? बस 14 डेज रखेगा. चाहे वो कुछ अपने पास पॉकेट में रख लिया, on the 14th day the money bill automatically gets passed. Rajya Sabha has no power in money bill. Who is the representative of people? कौन represent करता है लोकसभा को? लोकसभा के एमपी. अगर लोकसभा ने बिल पास किया है, it represents the people, so Rajya Sabha has no power in terms of money bill. Any doubts with this? Okay. अगर कोई संविधान का बिल था, जैसे आर्टिकल 370 लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में फेल हो जाता, तो क्या होता? जॉइंट सेशन होता? ये सुनो, मैंने क्या बोला है? जॉइंट सेशन हो ही नहीं सकता. कौन से दो केसेस में होता है? ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल 1 एंड 2. जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो दोनों को ही पास करना पड़ेगा. सिंस दोनों को पास करना होता है, दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट के पास एक ही पावर है, साइन. मनी बिल लोकसभा की बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, राज्यसभा की पावर नहीं है. प्रेसिडेंट के पास दो ही चॉइसेस है, या तो रिजेक्ट या साइन. इट कैन नॉट सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन. बाकी जितने बिल में जॉइंट सेशन आ रहा है उसमें तीन चॉइसेस. प्रेसिडेंट के पास है क्या? साइन, रिजेक्ट और सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन. कोई डाउट इसमें? कोई पॉकेट वीटो तो पॉकेट में रख लिया. इज इट क्लियर? टाइम ही नहीं दिया, ऐसा कभी हो नहीं सकता. प्रेसिडेंट टाइम ना देना ऐसे. अगर गवर्नमेंट का ब्रूट मेजोरिटी है, गवर्नमेंट बोलेगा आजा बेटा तेरे को इम्पीचमेंट करके दिखाते हैं, तभी तो प्रेसिडेंट चाहे रात के 4 बजे हो. यू वुड वेरी गुड एग्जांपल, the Maharashtra elections earlier when Fadnavis government came to power, or this guy Sharad Pawar's nephew Ajit Pawar shifted on the other side. 4 o'clock, the president's signature was there for amendment. Yes. Hmm. तो करी उसके पास एक ही चॉइस है, चॉइस पास करना पड़ेगा. द बिल रिमेन सेम. प्रेसिडेंट का कोई फर्क ही नहीं पड़ता. वाइस प्रेसिडेंट का कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? President does not represent the will of the people. President does not represent the will of the people. President चेंज हुए. द्रौपदी मुर्मू से पहले कौन था? रामनाथ कोविंद. रामनाथ कोविंद ने बिल साइन किया, पास, बोला कि चलो जाओ फाइनेंशियल बिल पास करना करते, या मनी बिल करना करो. गया, पार्लियामेंट ने पास कर दिया, इलेक्शन हुए, हट गया. दैट्स इट. ही डज नॉट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल. हु इज द पीपल? पीपल ने किसको चुना है? सांसद, लोकसभा सांसद. The Lok Sabha MPs are the all power because they are the ones that are representing the will of the people. तो सबसे ऊपर कौन रहेगा? Will of people. What does preamble say? We the people of India hereby solemnly pledge. Who are we the people of India? We solemnly pledge so and so. Is it clear? बस what we are doing, we are saying हम चुन लिया, आगे जो करना है करो, मेरी मर्जी. इतना टाइम नहीं है मेरे पास, आई एम वेरी बिजी. सो इंडियन पब्लिक से वी आर वेरी बिजी, हमारे पास टाइम नहीं है. तुमने जो करना है करो, हमने वोट कर दिया, अपना काम कर दिया. 5 years, डोंट ट्रबल अस.
That's what we, the people of India, say. Is it clear or not? Okay, can we continue further? Simple. So as I said, simple things are going to happen. What I did in the start is going to happen again and again and again. कुछ है ही नहीं. पहले हाउस ने पास किया, दूसरे ने पास कर दिया, ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट हो जाएगा. पहले हाउस ने पास कर दिया, दूसरे ने अमेंडमेंट दे दी, वापस जाएगा, रिकंसिडरेशन नहीं माना, ज्वाइंट सेशन कर लेंगे. वो ज्वाइंट सेशन सिर्फ 3 केसेस पे. कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सॉरी, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल. कैन आई डू amendment in constitutional amendment? No, because if I am doing constitutional amendment और वो पास हो जाता है, automatically the bill is rejected. So constitutional amendment बिल्कुल भी चेंज नहीं होएगा. सिंस दोनों हाउस से पास हुआ है, प्रेसिडेंट के पास एक ही पावर है. क्या है? सिंपल लॉजिक है ना. तो जब दोनों हाउस ने पास किया और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से स्टार्ट हुआ है, तो उस बिल पे प्रेसिडेंट के पास पावर क्या है? बस सिग्नेचर. उसको आता है, सिग्नेचर मारता है, थैंक यू, मेरा काम हो गया. स्टार्टिंग में सिग्नेचर मारा, एंड में सिग्नेचर मारा, rest is completely up to you. Are we clear with this? Okay. Can we continue further? Assent of the president. अब किसका आ जाएगा? द्रौपदी मुर्मू के पास. She opens up a page. She wears her specs. वो देखती है CAB है, Constitution Amendment Bill. क्या करेगी? जल्दी जल्दी जल्दी. Signature. If it is a money bill, what does the president have? Either a signature or a rejection. Is it clear? What's a financial bill and ordinary bill? The president has signature, rejection, and equal to. Is it clear? So opposition क्या बोलता है? कई बार क्या बोलता है ऑर्डिनरी बिल पे? ये तो अट्रॉसिटी हो जाएगी लोगों के साथ. मैं प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे. प्रेसिडेंट सुनता ही नहीं. प्रेसिडेंट अपना कहता है, यार मैंने अपनी, आई एम गेटिंग अ सैलरी, ऑनरियम, व्हाई शुड आई वांट टू किक माय ऑनरियम? आई एम डूइंग द सिग्नेचर. इज दैट क्लियर और नॉट? Has to. There's no other choice because it's already represented the will of the two houses. Lok Sabha and Rajya Sabha also started with it. Is it clear? Now we come to the assent of the president. What are the veto powers article? Veto power article 123 is ordinance 111. So president can either reject the bill, sign the bill, reject the bill, or send it back for reconsideration. If the president sends it back for reconsideration, only once he can reconsider. After that, he has to pass the bill. Can't reject it second time. Reconsideration का एक और बार parliament ने pass कर दिया, it has to be passed. He has to sign which bill? Come what may. CAB. He can sign all bills. कोई doubt is done. This is also simple. The president cannot withhold consent if the same bill is passed again. मैंने क्या बताया था? एक बार reconsideration हो गया, वापस आ गया, he has to sign. Sorry, just veto powers. Veto powers is the case that he has. When the parliament president ने, जब मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, president साइन कर देगा, रूल क्या बन जाएगा? जो एक्ट है वो क्या बन जाएगा? It becomes a law. The bill now becomes an act, a law, a fiat, a decree, whatever it is. Is it clear or not? That's the case. Any doubts still here? Is it difficult? No. Now we come to 3 types of financial bills. Money bill, Article 110. Money bill can only start in Lok Sabha. What is money bill? It deals with taxes, anything taken out of the constitutional consolidated fund of India. Which article is consolidated fund? CFI 266. 266. Thank you for making me remember. That gives you a mnemonic. You had a slip of tongue. Too sexy bill. Too sexy. That's money. Money is going to be 266. Remember it from that. You cannot forget it. अब तो तू forget ही नहीं करेगा. Is it clear or not? Okay. Remember or not? I remember it like that. If you don't remember it, just a mnemonic for it. Same. Is it clear? All the पैसा जहाँ पे है, वहाँ पे क्या होएगा? Money is too sexy. Is it clear? So just remember it from that. Clear? Simple way. Okay. 1. 266. Then 1 is public account. We'll be discussing this. I'll be discussing the funds also. CFI तो मैंने short form में लिखा हुआ है. अब देखो 3 टाइप के बिल हैं. हमने ऑलरेडी किया फाइनेंशियल बिल. मनी बिल को इस करके करना है क्योंकि इसमें आएगा क्वेश्चन क्या आएगा? इसमें कौन सा मनी बिल का टाइप नहीं है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा. तो हमारे को अभी तक जो हुआ सिंपल था.
ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, जो अभी तक किया है तो बहुत ही इजी हो गया। देखो मैं बोलता रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाओगे एक पेज के अंदर पूरा का पूरा पॉलिटी है, इफ यू मेक शॉर्ट नोट्स, बट अंडरस्टैंड लॉजिक्स। Financial bill, which article is that? 110 money bill, 117 1 and 17 2 is financial bill. For money bill क्या चाहिए? लोकसभा, अगर लोकसभा पास करेगा तो किसका असेंट चाहिए? स्पीकर और लोकसभा. Only he can decide whether a bill is a money bill or a financial bill, which is the case. Who decides a bill is a money bill or a financial bill? Speaker. Can only be introduced in where? Can only be introduced in Lok Sabha. Any doubts? Financial bill 1 contains money bill and other matters. Also introduced in Lok Sabha with president recommendation, not this. Can be introduced in either house. The other one, financial bill 2. I told you both Lok Sabha plus Rajya Sabha. अब ये बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही सब कुछ कर लिया. इज इट क्लियर? बस उसको एक बार रिवाइज कर लेना शॉर्ट नोट्स में. ऑर्डिनरी बिल कैसे करेंगे वापस? ऑर्डिनरी बिल both LS plus RS. Is joint session possible? Yes. Joint session कौन सा है? Article 108. President can sign it, reject it, or send it back for reconsideration. हो गया. Constitution Amendment Bill can start both in. Can joint session happen? No. President has only one choice. यही किया है ना? That's it. तो जो बार बार लिखी जा रहा है, बार बार लिखी जा रहा है, उसको करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में कर लिया हमने. Is it clear? Financial Bill 1 starts in Lok Sabha. Joint session possible. President signature required. President can sign it, reject it, and reconsideration. Same financial bill 2. Now here it is Lok Sabha plus. That's only difference. President can sign it. President assent is required. Joint session, yes. President can sign it, reject it, and reconsideration. That's my short notes. Tick means pass. Cross means reject. Equal to means reconsideration. That's how I did. Clear? Financial bill 2 is also another thing. Other thing. Now we come to money bill. This is where the question are going to come. Which of the following is not a provision given in the money bill? ऐसी कौन सी चीज है जो मनी बिल में नहीं है, या ऐसी कौन सी चीज है जो मनी बिल में है? यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, जहां पे 6-7 चीजें हैं. वो क्या करेगा? It will give you 3 and 1 extra. Answer which of the following is, whenever the question comes, not underline it. Whenever the question comes. So that's how you do it. Okay. Same for any topic, any subject that you do, science or anything. What is the word? Not. Please underline it. Which of the following is not true? कोई भी टैक्स लगाना हो, पहला चीज क्या आएगा मनी बिल में? कोई भी टैक्स लगाना हो. मैं शॉर्ट नोट्स कर रहा हूँ, लिखते रहो. व्हाट इज गिवन इन द मनी बिल? टैक्स. कोई भी टैक्स लगाना हो, भारत गवर्नमेंट ने कहीं पे भी टैक्स लगाना है तो क्या करेगी? किसके थ्रू लगाएगी? मनी बिल. कोई भी पैसा निकालना हो, किसके थ्रू? 266. 266 क्या है? CFI. पैसा निकालना हो, जैसे आधार में गवर्नमेंट ने बोला मेरे को कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा निकालना पड़ेगा और लोगों को देना पड़ेगा, इस करके आधार बिल क्या है? मनी बिल. कोई भी पैसा गवर्नमेंट टू क्रिएट दिस फंड, दैट इज व्हाट वी से. इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज एग्जांपल व्हाट द गवर्नमेंट सेड कि मेरे को तो ये करना पड़ेगा, तो ये क्या है मेरा? आधार के थ्रू. इज इट क्लियर? कोई भी पैसा हमने लिया हो या कोई भी लोन लें, वो किसके थ्रू होएगा? लोन, बोरोइंग. हर साल गवर्नमेंट, वी हैव अ फिजिकल डेफिसिट. पॉलिटी की बात करता हूँ, सॉरी इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ. वी हैव अ फिजिकल डेफिसिट अराउंड से 4% ऑफ जीडीपी है. एग्जैक्ट नंबर आई डोंट रिमेंबर इट राइट नाउ. 4% ऑफ जीडीपी. दैट मीन्स अगर जीडीपी 100 रुपए की है तो हम 4% का हर साल लोन लेते हैं. इज इट क्लियर? हर साल 4% ऑफ जीडीपी का लोन लेते हैं. किस कंट्री का, मतलब कि टॉप 10 कंट्रीज में से किस कंट्री का लोन अपनी जीडीपी से बहुत हाई है? यूएस का वर्स्ट केस सिनेरियो.
और अभी और लोन लेने वाले हैं. Is it clear? So this is the case that has happened. India has way better. सबसे बहुत अच्छा है इंडिया का. इंडिया का 70-80 है of the total, which they consider as very good. मतलब कि हम अपनी जीडी का 70-80% अभी लोन पे है. Is it clear? No country is basically without loans. So I have to take a loan from somebody every year to finance project. Every country has takes loans. Every country says, if I have you played Sims? कितनों ने Sims play किया है? Raise your hands. Sims, SimCity. So in that you took loans so that you can create resources which you can pay off. हमने लोन अब एक एग्जांपल है. how many of you heard नितिन गडकरी speak? उसने बोला मेरे तो इतना बजट आता ही नहीं है. So what I did, I decided to take you a loan. लोन किससे लिया? आपसे लिया. आपको बोला गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, हम आपको इंटरेस्ट देंगे. गवर्नमेंट अपना सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का कौन सा बॉन्ड है जिसने बहुत पैसा दिया? इट ऑलमोस्ट गिव यू 288% रिटर्न इन 5 years. Which one? Not 288, 144%. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड. एक तो गोल्ड का रेट बढ़ता है. हाँ, you can do it now, but then there's a lock-in period for all of it. I think so 144% is what it is. Huh? No, more. 5 to 10 years. 5 years or 10 years, 5 to 10 years. वो नहीं, वो डिफरेंट है. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वगैरह में और है. प्लस यू गवर्नमेंट आपको जो इंटरेस्ट भी देती है, प्लस गोल्ड का रेट तो बढ़ ही रहा है. गवर्नमेंट तो बोलती थी get from government treasuries. You are allowed. Everybody can. So government takes out treasuries. This is the most safest bonds because why are they called safe? By the way, government bonds safe क्यों होते हैं? अगर पैसा डूब कैसे डूब जाएगा? कौन छापता है पैसा? वो छापोस मनी. मेरे पास होता मैं बोलता लो कहीं पे मेरी गवर्नमेंट डूब गई, पैसे नहीं है तो छाप दो और. Which is true. That's how it works. So I can never lose. Government bonds are the safest because the fact that money नहीं है तो छाप दो और क्या करो. That's how the government bonds are safest. The government bonds don't tend to fall down. That's why the government bonds are the safest. तभी तो बचपन से सुना होगा पापा मम्मा बोलते थे केवाईसी है बहुत अच्छा है, किसान विकास पत्र बहुत अच्छा है. Is it clear or not? These are government bonds. So the interest may be less, but they are very safe. They are actually safer than your FDs. Why are they safer than FDs? I'm just digressing. थोड़ा सा. No, no. Why is your FDs or money in banks not safe? That's another question. You get only 5 lakhs. 5 लाख ही सेफ है. तो आपके पास 50, अगर आपके पास 50 lakhs की एफडी थी, बैंक डूब गया, खुश हो जाओ 45 के अंदर. You only get 10%. So it is better not to invest all your money in a single bank. Divert. At least 5 are safe. How many of you knew this? बच गया तू. All your money that you made from casino, all would have gone to waste. So that's the case. Okay. मनी बिल क्या हो गया? सिंपल सा है. तो मेरे को पैसा निकालना है, मेरे को पैसा. मनी बिल क्या हो गया? कोई टैक्स बनाना है, मेरे को लोन लेना है. एनीथिंग. गवर्नमेंट हर साल लोन लेती है ना, तो कैसे लेती है? मनी बिल के थ्रू. या फिर कोई भी रिसोर्स है आपको देना है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. हाउ डू वी डू इट? थ्रू दिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. अप्रोप्रिएशन क्या होता है? यूजिंग ऑफ मनी फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स और एनीथिंग. इसको क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन. एनी स्कीम विच कम्स आउट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू मनी बिल. कोई भी स्कीम है उससे पैसा निकालना है. अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? इतना मेरे को पैसा चाहिए. इज इट क्लियर और नॉट? Not MP. A very good example, say for example, every ministry, I'm going to explain it. जब budget आएगा, I'm going to explain all this, appropriation and everything. There is extra grants, surplus grants. ये सब, I'm going to explain it. Appropriation means every year a ministry says, I need this much money. So this money will come out of consolidated fund of India. That's a part of the money bill. So अभी क्या क्या पता लगा money bill में क्या होता है?
टैक्सेस बनाना आप पे, हमारे नागरिकों पे। गवर्नमेंट ने बोला, अच्छा राकेश जैसा था, राकेश से गवर्नमेंट ने पूछा, मोदी जी ने पूछा, स्वच्छता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अरे चल 0.5% कृषि के लिए, सॉरी, स्वच्छ भारत अभियान, किसानों का भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसने बोला हाँ। कह रहे चलो 0.5 कृषि के लिए एक्सेस, काउस की प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? काउसेस 0.5। सो एनी टैक्स which is made is done through money। और सोल्जर्स का भला होना चाहिए नहीं होना चाहिए? काउसेस लगा देंगे। तो गवर्नमेंट आपसे पूछता रहा क्या चाहिए, ये होना चाहिए, सारी कहते हैं हाँ हाँ। चलो, गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू मेक मनी, तो गवर्नमेंट बोलता है चलो टैक्स लगा देते। सो दैट इज फर्स्ट मनी बिल। इज इट क्लियर? सो स्वच्छ भारत अभियान सेस जो लगा था, विच इज नाउ अ पार्ट ऑफ 18% जीएसटी में आ चुका है, पहले 12% था। 12 के साथ गवर्नमेंट आई, कहती नहीं नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए स्वच्छता, आसपास स्वच्छता होनी चाहिए, तो कहता हाँ चलो भाई 0.5। ऐसी काउ सेस लगा दिया। फिर ऐसी करते हुए कृषि कल्याण सेस, देयर इज अ काउ सेस, दिस इज 0.5%। Now it's 18%, which the government now distributes. Earlier there used to be 12%. Earlier there used to be 12% VAT, which slowly started increased to 15 point something. All these were cesses added up every year. Sorry, cow is the national animal. हमारी माँ है. Is it clear? So that's the case of it. Not for other animals. It's only for cow. Okay, is everybody clear or not? So these are the things. Very simple thing. Money bill क्या होएगा? अब आप बताओ क्या होएगा money bill? सिंपल है, कोई भी टैक्स लगाना है, सेकेंड पैसा निकालना है, अप्रोप्रिएशन करना है, या फिर लोन लेना है, इट इज ऑल थ्रू मनी बिल। Declaration of any expenditure to be charged in the consolidated fund of India, increasing the amount of any such expenditure, इसको बोलते हैं सरप्लस। तो जितना भी बजट से रिलेटेड टर्म्स होंगी, सुन लो अभी, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, जितने भी बजट से रिलेटेड टर्म्स होंगी वो सब किसके अंदर आएंगी? मनी बिल। The receipt of money on account of consolidated fund of India or the public account of India, or the custody of issue of such money, audit of accounts of the union of a state, any matter incidental to any matter specified in the subclause A to F. ये सब क्या होगा मनी बिल के अंदर? मनी बिल कौन डिसाइड करता है? स्पीकर। That's a power. That's why Lok Sabha has more power. How many days can it stay in Rajya Sabha? Money bill. वैलेंटाइंस डे की तरह है, 14 दिन रखते हैं, फिर दिल टूट जाता है इनका। याद रखने का सिंपल तरीका, याद रह जाएगा। How many days? Now you'll remember. How many days? 40. Is it clear? Just remember, because there are going to be different numbers for it. Next, financial bill 117, 1 and 3 we've already discussed. Only in Lok Sabha recommendation, I've done all this. I don't want to do this again. 117.3, it's only bill which goes in Lok Sabha and Rajya Sabha. 171, Lok Sabha. Joint session is allowed. President can accept it, reject it, or reconsideration. Plus minus equal to. Done. Budget in the parliament. Now we come to it. Who presents the budget? सबसे पहला क्वेश्चन, भारत का बजट कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ, कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। यस, यस, यस। हाँ, who presents the budget every year in the parliament is presented by the finance minister। निर्मला ताई, क्यों बोलते रहते हैं निर्मला ताई? फॉर दैट रीजन। निर्मला ताई क्या करेगी? टैक्स नहीं लगाया, खुश हो जाओ। इसे क्लियर? किसी ने पूछा प्याज क्यों महंगे हो रहे हैं, प्याज महंगे हो रहे हैं, कहती मैं तो प्याज खाती नहीं हूँ। Better. Okay, that every government is going to say. Okay, back again. Clear? फिर किसी ने पूछा ड्यूरिंग सम कोविड टाइम, किसी ने बोला कि मैडम आई डोंट हैव अ जॉब नाउ, आई वाज अ पायलट, हाउ एम आई सपोज्ड टू पे ईएमआई? ठीक है। So that was the answer. Uh, Very decent job she's done. So we just to remember it. Remember, what's finance minister? He's the one who presents the budget every year. Till 2017, the railway budget and the finance budget used to be presented separated. In 2017, they became together. From 2017 also, generally the budget was presented in last week of February. Now it's presented in the first week of
February. Who presents it? The finance minister. Ministry of Finance budget से पहले बंद होता है. अगर मैं Ministry of Finance में काम करता है ना, I was working in the budget, my phones would be taken away. I would be sitting inside the finance department. I will not be moved allowed for 2 months. बंद हो जाता है. Seal. Because if you मेरे को पता हो, example. Should I give an example how markets work with finance? I know very clearly that what part of the speech, एक example देता हूँ how markets different. Okay, 1 minute. And I was watching the market that day exactly when she said, "Oh, the tax slabs have changed." So suddenly the tax was to five lakhs. It has to come to 10. Within 1 minute, the market saw a spike of 100 points. When she finished this, by that time she finished that thing, it went back to the same position or in negative. 1 minute. Imagine how the market works. And had you known which things were getting more expensive, which things were getting more cheaper, you would start investing in that. It causes this. Clear or not? And very interestingly, just give an afterthought. All the wars happen when the markets are not running. कोई भी war market के time पे नहीं start होता. Either they have think logically. I'm not saying it's, if any war was start during market time and you know, of course, India Pakistan war happened, skirmish happened. Suppose it happened during market time, nose dive that time only. Even Israel and that happened when the market was not working. Nothing happens during the market hours. Because if any of these information was happening during market hours, it has an impact. Okay, back. सबसे पहले बजट कौन प्रेजेंट करता है? कौन है फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की? निर्मला सीतारमण. It's presented. दोनों बजट इकट्ठे होते थे लोकसभा, sorry, railway and that they were changed in 2017. First, when is it presented? First week of February. When is it presented? First week of February. तीन चीजें हमें इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 110 क्या है? 112 क्या है? There is no term budget. Please write down 3 terms. There is no term budget. Annual financial statement. And what is 265? Any taxes to be employed would be done through parliament. कोई भी नया टैक्स लगाना हो तो किसके थ्रू होएगा? पार्लियामेंट के थ्रू. एनी डाउट्स? तीन सिंपल क्लियर है कि नहीं? कब हुआ था रेलवे ऑन दैट? याद करने का तरीका, रेलवे प्लस 112 2017-18 फर्स्ट वीक फेब. बजट कब स्टार्ट होता है? नया साल, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च. लगता 1 अप्रैल से. ये नहीं है कि आज बोल दिया सस्ता हो जाएगा. कब से स्टार्ट होएगा? तो फाइनेंशियल ईयर पूरा कंप्लीट करना. बजट में होता क्या है? दिस ईयर्स डॉक्यूमेंट्स, लास्ट नेक्स्ट ईयर्स डॉक्यूमेंट्स एंड लास्ट ईयर्स डॉक्यूमेंट्स. कितना खर्चा था, क्या एक्सपेंडिचर रहेगा, क्या रेवेन्यू रहेगा. इज इट क्लियर? This I'll be doing more in current affairs. Key innovations, because it's not going to be in your book. Anusudan National Research Foundation, R&D. This is important because first time we are discussing 265 is imposition of taxes. No new tax can be imposed without the approval of the parliament. Clear? 3 articles we need to remember. 266 Fund of India. अनुसूदन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है? जैसे अमेरिका में बहुत ज्यादा पैसा रिसर्च के लिए जाता है यूनिवर्सिटीज को, वैसे इंडिया ने क्या बोला? यूनिवर्सिटीज के पास पैसा जाएगा फॉर दिस प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड innovation. India is now spending more on research and innovation. Expansion of space economy, 1000 crore fund for which people? Space. Can you give me an example of any startup of space who has done very well? Agniban, Agnikul Gurukuls, Agnikul.
first 3D printed rocket. India, private company. Which is the only company now? Which company has only or who has the technology for reusable rockets? And China, China has started now, private only. So it was only SpaceX, but now who's dominating SpaceX? China did it first, where it landed in the water. It fell down, but they were just trying to control it. They were able to control it. So reusable rockets tend to make the rockets more cheaper. So this is the case. Next, National Quantum Mission. Why are we doing quantum? What is the difference quantum computing and normal computing? How many pins? I told you also. जैसे एक question है. मेरे को इसका ATM crack करना है. नहीं, तेरा crack करना है. Because you तो are into that thing. Gambling. So he has a good amount of money. So I want to crack his ATM. What's the number of choices I have? I'll tell the computer. The computer goes 1010 binary. It tries and it has to put when it keeps on coming cross, 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 right? So it'll have to do all the calculation for quite some time, and finally, when all of them become 111, then the computation is done. Binary quantum doesn't work like this. Quantum computing is 101010. It makes keeps on making branches simultaneously. Because जैसे हमारे normal computing में होते हैं, मैंने कोड पाया 4340, इसमें आ गया because it did not work. All of them did not work. In quantum, it starts working. जैसे 1 भी उठाया हुआ है, 1 के साथ 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 दूसरी calculation चली जा रही है. And as soon as all the calculations fit, it will stop. So quantum computing reduces the speed approximately 100 to 10,000 times of your normal computing. So it is not working. I hope binary समझ आ गया. It is not working like a binary. ये तो normal computing 1 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? It stops. In this, quantum computing does not stop. So we are working on quantum computers, and suppose your chipsets, your AIs are working on quantum computing. Look how quickly we'll be doing things. Is it clear? People say AI is the technology. Quantum would be the next further. Because if you quantum and AI, look how fast you can do. Because then you don't require chipsets to do that. India AI mission. This is also major. Where India ने बोला कि देखो, listen, India is buying chips. और your जो जैसे नेवेडा वगैरह की हैं, ये इंडिया ने बाई खरीदी है. इंडिया बोलता है एंटरप्रेन्योर्स को, तुम आओ, तुम डेवलप करो हमारे साथ, जो भी तुम्हें रिसोर्स चाहिए, यू कैन टेक इट फ्रॉम अस. दैट्स इट. यूनिफाइड R&D पोर्टल, जीन बैंक फॉर जीन बैंक एज इन क्रॉप्स के लिए. दैट्स व्हाट वी डू. All R&D would be put in one place. So like how many of you know this concept is there? Space station, not space stations, where you don't have to buy an office. You can sit somewhere and study. What do you call that? Like you don't require. They're not one offices, but a single floor has 1,000 offices. Workstations. I hope everybody knows workstation. Okay. I don't need to buy an office. I want to make this as a workstation, so I provide coffee, everything here. So you can now pay me a daily rent and come and work here. So that's what we call, yeah, co-working space. So that's what we call as workstations. Now, if somebody's a developer here, somebody's a graphic designer here, they both can collaborate and work together. Now, same thing what happens, every R&D from every place of university gets collected. So if I'm looking for a solution, I can collaborate with somebody else. So we are fixing up the gaps here. Is it clear? That's what we have. I'll be explaining this because budget will be coming. I'll just make short points of it, which is going to be important. Okay, what's article budget? When is it presented? First. How many days do we have for passing? 26 days for voting. Demand for grants. On the last day, speaker puts all the remaining votes and फिर क्या करता है सीधा bulletin procedure. 26 days. Who presents the budget? In Lok Sabha or Rajya Sabha? And then in Rajya Sabha. What's the process? First is presentation. जब speech देती है,
सेकंड क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट. From after departmental committees. I'll explain. After the budget comes from departmental committees. Let me go through it. I'll explain. Don't worry. First is the presentation. निर्मला ताई आई, present किया. फिर that is the case. फिर हो गया, साथ के साथ वोटर अकाउंट हो गया, क्योंकि अब नया बजट आएगा उस टाइम तक the government requires money. So government says okay, let's keep 2 months का पैसा अलग से पहले से, कि मेरी स्कीम्स ना बंद हो जब तक हम ये बजट पास ना करें. दैट्स कॉल्ड वोट ऑन अकाउंट. जिस टाइम पे हर किसी को सैलरी तो जानी है, या गवर्नमेंट की सैलरी बंद हो जाती नहीं होती, 2 मंथ्स जितनी भी पुरानी स्कीम्स है वो चलती रहेंगी, उसके लिए पहले ही पैसा साइड पे रख दिया जाता है. इज इट क्लियर? कब बजट आता है, कब नया स्टार्ट होएगा? तो फेब में हुआ, मार्च हुआ, 2 महीने का तो पैसा चाहिए, और बजट एक दिन में तो पास नहीं होने वाला, तो इसको साइड पे रख दिया. ये क्या होता है? 2 मंथ्स. वोट ऑन अकाउंट मिनिमम 2 मंथ्स, कैन बी लॉन्गर इन केस ऑफ इलेक्शन ईयर, बिकॉज इलेक्शन में टाइम लगने वाला है. वोट ऑन अकाउंट. इट्स गिवन प्रेजेंटेशन ऑफ, ये ऑलरेडी पॉइंट्स में, बस अंडरस्टैंड. हाँ, इंटरिम बजट बोल देते हैं, या फिर थोड़ी देर के लिए ज्यादा, 2 महीने से ऊपर रख देते हैं, बिकॉज जब तक नई सरकार नहीं आएगी काम तो होने है ना. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो चलना ही है, नॉट द अदर स्कीम जो मोदी जी ने बोल दिया था बीच में. क्या बोल दिया था? देयर वाज अ स्लिप ऑफ टंग फ्रॉम मोदी जी. क्या था राकेश? यस, ओके, बेटी पटाओ बोल दिया था. Okay, so this is slip of tongue. Okay, back again. So there's presentation of. Don't do slip of tongue. You'll get beaten up otherwise. Okay. So first is presentation of budget. Second is voter account. Everybody clear? 2 months it has to happen for this time. General discussion. जो अब क्या है, पार्लियामेंटेरियंस for 3-4 days they will discuss. कोई बोलेगा बजट बहुत अच्छा था, कोई बोलेगा बहुत बुरा है. डिस्कशन होगी. उसके बाद क्या होएगा? स्पीकर क्या बोलेगा? ओके टाटा बाय बाय, थोड़ी देर के लिए हम छुट्टी करते हैं. जैसे क्या, फर्स्ट 3 स्टेजेस बहुत सिंपल है. पहला क्या है? प्रेजेंटेशन. सेकंड इज वोटर अकाउंट. थर्ड क्या है? डिस्कशन, जनरल डिस्कशन. वाह क्या बजट है, निर्मला दाई ने मजा कर दिया, अब लोग खुश है. ऑपोजिशन बोलता है गरीबों के लिए तो कुछ किया ही नहीं, मनरेगा का तो पैसा आपने काट दिया. सो ऑपोजिशन इज सपोज्ड टू अपोज द गवर्नमेंट. जनरल डिस्कशन. The fourth is when it goes to departmental committees where the bill is scrutinized. How many you know departmental committees? That's where you do not know. यहाँ तक तो समझ आ जाएगा. इसके बाद then comes the detail of it. Is it clear? First 3 things you know. This happens behind the scene. जब बजट के बाद छुट्टी होती है, रिसेस होती है, इसका मतलब ये नहीं छुट्टी होगी. All the MPs have, there are 24 committees in which there are 30 members each, which they sit down and they discuss on various aspects of budgets of various ministries. ऐसा होता है. वो नहीं है नहीं कि 30 दिन बैठ गए बस बात कर दी, एक ने बोला बहुत अच्छा बजट है, एक ने बोला बहुत नहीं है. अब 24 कमिटीज में जाएगा, 24 departmental committees where they will discuss on the budget. Reports are going to come. They can ask people to come down and submit the reports. Why you need this money? Why this has to be done? Why this has to be done? After scrutinizing by 24 departmental committees, now it comes back to parliamentarians, MPs. Now it comes back to the parliament again, where the parliament now reconvenes. How many days do we have now? 26 days within the time the budget has to be passed. If it is not, automatically the government has to resign. So in 26 days, if there is no discussion taking place, automatically the speaker will say, okay, quickly, let's have voting. I think so 2023 budget passed without even a single discussion. Because I think so उस टाइम पे आंध्रा वालों ने प्रोटेस्ट कर दिया था कि हमें स्पेशल स्टेटस नहीं दिया. 2023 की बात. Is it clear? And automatically this is called gulletone voting. Till this part is clear or not? And voting for demand for grants. Clear? Appropriation bill, passage of finance bill. Finance bill क्या होता है? Any taxes to be. Okay, let's now do it step by step. Yeah. All this is MB.
All this is money bill because you're taking money out of the constitution, consolidated fund of India. Anything apart from money is called finance. There is no proper description of finance bill. There's a very good description of money bill, but in finance bill, there is nowhere in the constitution given a proper description. Anything apart from money bill is called a finance bill. Everybody clear with this? Now we're going to discuss. What is vote on account? 2 months. First, the निर्मला ताई got the budget. 2 महीने तक बजट पास नहीं होना तो पैसा तो चाहिए. That's vote on account. तभी के तभी वोटिंग हो जाती है. बोलते 2 महीने का पैसा सेपरेट रख दो. इलेक्शन ईयर में ये टाइम ज्यादा हो जाएगा. क्लियर? Budget is Article 112. It's money bill. Basically, budget itself has a lot of money bills and financial bills. Is it clear or not? What is the key feature? How many time? 2 months. During election years, how much? More than 2 months. General discussion क्या होती है? वाह क्या बिल है. दूसरा बोलता है वाह क्या घटिया बिल है. तो ये 3-4 दिन ऐसे चीची पे चलती रहेगी. उसके बाद क्या हो जाएगा? स्पीकर बोलेगा चलो छुट्टी करके आओ. सिंपल. फर्स्ट क्या है? इंट्रोडक्शन. सेकंड क्या है? वोट ऑन अकाउंट. थर्ड क्या है? जनरल डिस्कशन. जनरल डिस्कशन में क्या होगा? क्या बिल है. दूसरा क्या बोलेगा? क्या घटिया बिल है. 3-4 दिन ऐसे चीची पे होती रहेगी. उसके बाद क्या होगा? टाटा बाय बाय. Then it is sent to departmental requirement. So make short notes. How? Back. First write down presentation of budget. Quickly now write down short notes. Presentation of budget. FM. First week of February. FM first week of February. Lok Sabha, then Rajya Sabha. Vote on account. 2 months for carrying out the government. Next, general discussions. 3-4 days. After that, recess. Is it clear? Next, scrutiny by departmental committees. Another point, 26 days for passing of demand of grants. What are demand of grants? We're going to explain this. 75 days for financial bills, 265. 75 days for 265. कोई भी टैक्स लगाना है कितनी देर में अप्रूव होना चाहिए? 75 days. Any doubts? Scrutiny by departmental committees. I'm just making short notes. So when you study, please make shorter notes. Don't try to make long notes. Actually, it can be done within 3 pages, the entire, these many concepts. I did not do much. That's how I do it. Clear? Okay. Now we come to scrutiny by departmental committees. कितनी departmental committees हैं? 24. I said it, 24 departments. Total committees 24. How many members? 31. 21 from 10 Rajya Sabha. Yes. In 2000, it was expanded to 24 departmental committees. Tenure 1 year. Chairperson is appointed by the House, where the original starts. Ministry wise financial accountability, I've told you. Different ministries है, defense का कोई है,
फाइनेंस की कोई होगी, एक्सपर्ट कमेटी एनालिसिस, पीपल कम, फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हु इज द पर्सन, फाइनेंस सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही इज जस्ट द मिनिस्टर इज जस्ट डूइंग द जॉब, हु इज द मेन वन, द आईएएस. So the experts come, they tell I need it for this purpose. Is it clear? The reports are presented. That's what we call expert. 24 departmental committees, 31. छुट्टी नहीं होती बेचारों की. Is it clear? That's departmental. Now fifth comes demand for grants. Every ministry has some money. Defense ministry को कुछ पैसा चाहिए, फाइनेंस को कुछ चाहिए. इसे क्लियर? हम बोलते कई बार डिफेंस का बजट बढ़ गया. वो क्यों बढ़ा है? हर एक मिनिस्ट्री ने अपने अकॉर्डिंग एक बजट बनाया है. Expenditures estimates including the union presented to Lok Sabha for approval. If I need to buy Rafale, who do I take permission from? No money can be taken without the parliament approval. Is it clear or not? So then, if an MP, if we feel the government is having no power, the MPs of opposition can introduce three types of cut motions. Generally, अगर approve हो गया तो government will fall. Does not happen. तीन टाइप के cut motion क्या याद करने का तरीका? पेट. कौन से हैं? पेट. लिख लो. डिमांड फॉर ग्रांट्स. डिमांड फॉर ग्रांट्स अब हर एक मिनिस्ट्री अपना बजट लेके आएगी, बोलेगी अप्रूव करो. दैट इज ऑल द डिमांड फॉर ग्रांट्स. If the opposition finds there are certain demands not correct, they can introduce three motions: policy, economic, and token. याद करने का तरीका पेट. And they introduce a cut motion. Token cut means symbolic 100. Policy means reducing to 1. Is it clear? कौन से टाइप के कट मोशंस हैं? पेट, इकोनॉमिक एंड टोकन. इसे क्लियर? तीन टाइप के कट मोशन बस याद रखो. कौन से? पॉलिसी, इकोनॉमिक एंड कट. टोकन क्या होता है? 100 रुपए टोकन. एक पॉलिसी क्या हो गया? एक. इकोनॉमी, इट डज नॉट जस्टिफाई द इकोनॉमिकल एक्सपेंशन. डिमांड फॉर ग्रांट क्या? हर एक मिनिस्ट्री क्या बोलेगी? दे दे फोन, यस थैंक यू, उसको बाद में मैसेज कर देना, डोंट वरी. हाँ, policy, economic, and cut. Any doubts with this? Pet. Demand for grants क्या होता है? हर एक मिनिस्ट्री कुछ पैसा मांगेगी. Clear? Next. Appropriation bill and finance. Fifth क्या होता है? Appropriation. Just if any opposition finds that the government is on wrong footing and does not have members to support it, or it is trying to do corruption, you can introduce it. If the bill is passed, automatically the government will have to resign. It's just a way of checking whether the government has power or. Appropriation bill. It is a type of money bill, gives you authority to withdraw from Consolidated Fund of India. What's the article for Consolidated Fund? And what's the constitutional bias for it? 140. Introduced after demand of class as money bill, not amendable. Rajya Sabha authorized legal expenditure. Allow करता है. Financial bill क्या होता है? Implementation of taxes. कितनी देर में हो जाना चाहिए? गवर्नमेंट ने अगर पैसा लेना है तो पैसा कमाना भी तो पड़ेगा. गवर्नमेंट बोलती है इसकी तरह स्वच्छता चाहिए, हाँ चला जाए. ये कितनी देर में पास होएगा? दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल बिल. 75 days. डिमांड फॉर ग्रांट्स कितनी देर में? डिपार्टमेंट स्क्रूटनी जब 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज के बाद आगे जाएगा तो कितनी देर में पास होना चाहिए? 26 days. इज इट क्लियर? आफ्टर द थर्ड स्टेज जब आता है डिपार्टमेंटल कमेटी से आ जाएगा तो उसको 26 दिन. फाइनेंशियल बिल क्या होता है? कोई भी टैक्स लगाना. कितने दिन में? 75. अप्रोप्रिएशन क्या होता है? पैसा निकालना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. कोई डाउट इसमें?
towards something. A bias towards constitution. It is towards the constitution. A bias is tendency towards something. Additional and exceptional grants given in Article 115. This is not given in any book. Now, please understand. Again, something that will not be happy if I, because you will not be able to refer any book for the same. Additional grant रेफर अगर कोई एक्सपेंडिचर है, कोई खर्चा हुआ बिकॉज ऑफ अ न्यू सर्विस, उसके लिए हम क्या बोल देंगे? एडिशनल ग्रांट. हमने इस साल इंक्लूड नहीं किया था बट खर्चा हो रहा है, उसको क्या बोल देंगे? एडिशनल ग्रांट. मैंने एग्जांपल बोला, हमारे को एक एम्बेसी बनानी पड़ेगी हमारे को, इसके लिए खर्चा तो लगेगा, सो इसको क्या बोल दिया? एडिशनल ग्रांट. जो अकाउंट नहीं किया हुआ था इस साल के लिए, उसको क्या बोल देंगे? उसके लिए पैसा दिया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? एडिशन. थोड़ा सा एक्स्ट्रा. एडिशन और एक्सेप्शन में फर्क है. कौन सा आर्टिकल है एडिशनल एंड एक्सेप्शनल? 100 एंड अप्रोप्रिएशन कौन सा है? 114. एडिशनल हो गया. एक्सेप्शनल क्या है? कोई रीजन हो जाए जिसकी वजह से पैसा खर्चना पड़े, जैसे कोविड हुआ, वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए जाएगा? कंटेजेंसी तो प्रेसिडेंट का फंड होता है. कौन से फंड में जा रहा है? प्रेसिडेंट थोड़ी देगा अपने पैसे, वो तो प्रेसिडेंट का फंड है. ये एक्स्ट्रा ग्रांट है जो गवर्नमेंट पैसा लेगी. होस्टिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और रिस्पॉन्डिंग टू नेशनल डिजास्टर, एक्सेप्शनल ग्रांट अब तो देना पड़ेगा. एडिशनल है जो काउंट नहीं किया था, बाई चांस आ गया यार, हो सकता है ना तुमने. इट्स लाइक बजट इज लाइक पापा मम्मी से पैसे लेते हो. क्लियर और नॉट? one second. Example, let me just give an example of how you take it from parents. The government says today you have to, you have a bike. Government says, oh sorry, the your parents have given you money, they've given you everything for the bike, they've given you fuel. Today the government says a new security plate has to come in. You never knew the government was going to put in. For that you have to pay money. So वो क्या हो गया? Additional, which you have not thought of. तुम हर साल बाइक का पैसा मांगते हो, फ्यूल मांगते हो, अब एक नई डिमांड आ गई, उसको क्या बोल दिया? एडिशनल. एक्सेप्शनल क्या हो गया? एक्सेप्शनल हो गया, यू आर ड्राइविंग अ बाइक, कोई मार के चला गया, डिजास्टर हो गया, क्या कर सकते हो? बाइक तो ठीक करानी पड़ेगी, उसको क्या बोल देंगे? एक्सेप्शनल. इज इट क्लियर और नॉट? Additional is something which you did not know is going to happen. Exceptional is because of any disaster, anything wrong which has happened, which was not considered. उसको क्या बोलेंगे? Exception. Any doubts? Additional or exception दोनों clear? Yes. Exceptional. You have to spend more. Outbreak is not a grant. To stop the outbreak, we require money. This money will come from exception. Okay. Vote of credit. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. और टोकन ग्रांट. Vote of credit is more like a blank check to the government. During COVID, government actually got vote of credit because हमें नहीं पता कितना लगेगा यार. To meet unforeseen, urgent or indefinite expenditures. It's like a blank check from Lok Sabha to the government. Includes magnitude and scope of expenditure unknown and cannot be determined in advance. Actually, COVID was more like this thing, a vote of credit. The government could not foresee how much. Same war starts. Tomorrow the government does not know how much he has to spend. So क्या मिल जाएगा? Vote of credit. Token grant. So token grant is very simple. इसका पैसा डिफेंस मिनिस्ट्री का पैसा उसमें फेंक दो, या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री का पैसा डिफेंस में फेंक दो, उसको क्या बोल देंगे? टोकन ग्रांट. एक से दूसरा. सिंपल. एडिशनल क्या होता है? बाइक, which you are not thought of. Exceptional क्या हो गया? Something happens from one ministry to another. That's it. 4 types of grants are there. बहुत simple है. And I'm saying कोई book में नहीं है. Please just understand very clearly. Show me any book in which it is given. It's not given. It's बहुत simple है. Bike, which you did not know, additional. Some disaster happens, टूट गया, ये हो गया, वो क्या हो जाएगा? Exceptional. Vote of credit. Example, मम्मी पापा ने पूरा क्रेडिट कार्ड ही तुम्हें दे दिया, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी.
दैट्स वोट ऑफ क्रेडिट, याद रह जाएगा, क्रेडिट कार्ड से याद रखना। सो देयर इज अ ब्लैंक चेक, जितना मर्जी खर्चा कर लो व्हेन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। टोकन ग्रांट क्या है? बहन का पैसा तुम्हें चला जाए। इज इट क्लियर और नॉट? चार टाइप की ग्रांट्स है, फोर टाइप्स ऑफ ग्रांट्स डन। क्रेडिट कार्ड वाला कौन सा है? वोट ऑफ क्रेडिट। टोकन क्या है? एडिशनल, extra, exceptional, some circumstances. Is it clear? No. Supplementary and excess grants. Now, first, these demands will come after the budget, because during the year something can come up. This is budget में तो पास हो गया, पैसा चला गया, you're very happy, बस इससे ज्यादा budget is like your parents, बहुत खुश है, बस इतना पैसा खर्चा हुआ और नहीं। फिर तुम आते हो, पापा ये हो गया, पापा ये हो गया, पापा ये हो गया। These are the additional grants which are coming. Just remember budget like this. Parents are like, अच्छा इतना ही खर्चा होगा, जा जी ले अपनी जिंदगी। फिर तुम आते हो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। These are the extra grants that you have. Is it clear? Next one, supplementary, to cover additional expenditure over the budget. Purpose, raised during the same financial year, same as followed by regular budget demands and appropriation bill. You again have to get a bill signed from the parliament. Introduced by Finance Minister of Railways, for example, Ministry of Healthcare granted 12,000 crore in budget this. As new pandemic wave required further 5,000 crore extra चाहिए था, तो इसके लोग क्या बोल दिया? सप्लीमेंट्री ग्रांट। फिर से पार्लियामेंट से अप्रूव करेंगे। इट इज एडिशनल, अप्रूव कराते हैं इसको क्या बोल देंगे? सप्लीमेंट्री। What is excess grants? Taken after the financial year ends. Supplementary during the year, excess grants after the year end. These are parts of the grants इनको further नाम दिया हुआ है Parliament. Everything is approved by the Parliament. If it is during the year, it's called supplementary. अगर year की बात हो जाए, क्या हो जाएगा? Timing taken after the financial year ends, presented as demand for excess grants. Like example, 5 lakh, 3 lakh crore in budget, the ministry ended up spending 3.2 due to troop deployment. That is what excess में खर्चा हुआ। Excess फाइनेंशियल ईयर के बाद ले रहे हो, अगर आप साल खत्म होने के बाद ले रहे हो, कि होता है ना। एक एग्जांपल आपको बताऊं, भगवंत मान ने बोला कि जब यहाँ पे वो हुआ था टेररिस्ट अटैक पंजाब में, so CRPF and all these were deployed. So the defense ministry went up to asking the state ministry, give me money because my CRPF was deployed there. This much money was spent. अब वो एक्स्ट्रा पैसा लगा ही है, ट्रूप मूवमेंट में पैसा लगेगा, फ्यूल में लगेगा, तो उसने क्या बोला? स्टेट गवर्नमेंट को बोला पैसा दे। अब जो 20,000 करोड़ एक्स्ट्रा लगा, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हर एक स्टेट में ऐसे ही होता है, कई बार स्टेट खुद बुलाते हैं कि हमें अभी सिक्योरिटी चाहिए, तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री या MOH भेजती है, MOH उसका क्या चार्ज करेगी? पैसा चार्ज करेगी। If the state demands it, then it has to be paid by the state. If there is a situation, then the state has to discuss negotiations. It's like this. Okay, everybody clear? Okay. This is clear or not? Then before we do funds, write short notes on this quickly. Let's make short notes. Scrutiny by departmental. How many committees are there? 24. Write down. Scrutiny by departmental. How many committees are there? 24. How many members are there? 30. Term 1 year. What's the role? What's the role of departmental? To check ministry-wise expenditure. Second, experts' opinion. Is it clear? Now,
Voting for demands for grants, how many days? How many days is it passed? 26. What is appropriation bill? Ministries. Then there is financial bill. How many days? This is passage of financial bills. Sorry, 75 days. Appropriation is taken out of the Article 266, where you take out money from the government of Consolidated Fund of India. Is it clear or not? Appropriation. Financial bill 75. Now we come to different grants. Additional. What is additional? सोचा नहीं था एक्सेस ग्रांट. अगर एक्सेस ग्रांट और सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है, उसी साल हो तो सप्लीमेंट्री, अगले साल मांगे तो एक्सेस. बस पहले तो सिंपल सा बात है, इस साल मांगा सप्लीमेंट्री, अगले साल मांगा एक्सेस. और हमारे पास 4 टाइप की ग्रांट्स है. वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लिखो लिखो, वोट ऑफ क्रेडिट ब्लैंक चेक. वोट ऑफ क्रेडिट ब्लैंक चेक. What is vote of credit? Blank check. Additional grant. Excessive. Next year. Additional. उसके बाद एक और आ गया. Exceptional. Exceptional. Exceptional grant. हाँ. Additional तो वो है कि बाइक की वो आ गया. सोचा नहीं था इस साल. Additional is because of that. Exceptional is because of any situation that you did not think of. What's the next one? Vote of credit. What is vote of credit? Blank check. What is vote of credit? Blank check. Then you have token grant from brother to sister. Token grant brother to sister. Supplementary during the year, excessive next year. Now we come to different types of funds that we have. We have consolidated fund, which is given under Article 266. There is public account 261, 266(1). Contingency is the fund provided to the president. जो सरकारी खजाना होता है वो सब क्या है? आर्टिकल 266. पब्लिक कंटिजेंसी कंसोलिडेटेड फंड से, सॉरी, सरकारी खजाना जिसे बोलते हैं, नॉट पब्लिक. हिंदी में कंसोलिडेटेड फंड को सरकारी खजाना बोलते हैं. जितने भी एमपीज की सैलरी है, सब कुछ है, वो किससे आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ 266. 266(1) I think says PAC. No, 266(1) is that. Hmm. 266(2) and 266. Is it clear? That's consolidated fund. Any सरकारी खजाना is called a 266 consolidated fund. कोई भी पैसा सरकार का पैसा हो तो कहां से निकलेगा? 265 क्या था? टैक्स. वो तभी अप्रूव हो सकता है अगर पार्लियामेंट करे. What is 266(1)? Any money which is there, treasury and everything कुछ है. पब्लिक अकाउंट क्या होता है? जो भी हम बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं, पीपीएफ वगैरह का पैसा, वो सब किस में जाएगा? 266(2) पब्लिक अकाउंट. इसके लिए गवर्नमेंट को अप्रूवल की जरूरत नहीं होती. Contingency fund is the president fund which he has extra, which is at 500 crores. If at any point of time he finds some situation which is there where a money is required to be spent, he can spend it. But to refill it, it requires again
the parliament's approval. Is it clear? This is किसका पैसा है? The president. Disposal of the president. Any doubts with this or not? In terms of what? Generally, it has all the equal powers. We don't need to go through this. This I don't want you to go through. I want you to go through what are the special powers enjoyed by Lok Sabha and what are the special powers enjoyed by Rajya Sabha. Lok Sabha, simple. We've already done this. What's this article? Who has the power? Lok Sabha. Who has the power for money bill? Speaker. Second, joint session. Who generally rules? Is it clear? Joint session 108. Who rules? Lok Sabha. Budget passing with Lok Sabha. Article 75(3). Collective responsibility. Write down 4 points only. First is Article 110. Let's make short notes. We've already discussed this, so this is going to be going very quickly. MB money bill only starts in Lok Sabha. Second, budget. Voting only in no confidence or collective responsibility. Only in Lok Sabha 75(3). You are only answerable to prove your majority in Lok Sabha, not in Rajya Sabha. Is it clear? All voting for budget. Collective responsibility, एक भी मिनिस्टर गलती करता है सबके ऊपर आता है. अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेगा तो सारे मिनिस्टर रिजाइन करेंगे. ये नहीं बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर हो गया, मैं नहीं करता. So the point is everybody has to answerable together. If you sing together or you swim together. If prime minister resigns, automatically everybody has to resign. No confidence. And national emergency can only be passed in national emergency 352 can only be revoked by Lok Sabha, sorry, passed by Lok Sabha. That's where it starts. Is it clear or not? Voting for government. Government कहाँ पे lie करती है? It only lies in Lok Sabha. 4 points हो गए. Special powers. अब हम बात करते हैं special powers of Rajya Sabha. First of all, Article 249. What is the first article? This is Lok Sabha. National emergency. N352 is national emergency. Can only be passed by Lok Sabha. Any doubts with this? ज़्यादा कुछ नहीं बचा है. We've done with the entire thing. Rajya Sabha only can discuss. How many days? 14 days. Special powers of Rajya Sabha. Any article which is to be made related to the states. कोई भी स्टेट से आर्टिकल रिलेटेड हो वो आर्टिकल 249 सिर्फ कहां से आ सकता है? राज्यसभा. ऑल इंडिया सर्विस. इंडिया सर्विसेज. एग्जाम्पल दे सकते हो ऑल इंडिया सर्विस का? आईएएस, आईपीएस, ये सब कहां से स्टार्ट होंगी? They all start in Rajya Sabha. All India services can only be started in Rajya Sabha. Making 259. 259 means absolute majority चाहिए. Absolute majority चाहिए. तो ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे पास हमारे को हम वापस शेड्यूल्स में आते हैं. फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है? नेम ऑफ इंडिया एंड स्टेट. सेकंड क्या है? सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट. सैलरी लिख लो. सैलरी प्लस इमोल्यूमेंट. Name India plus states. What is my third oath? Fourth, allocation of seats in Rajya Sabha. Fifth schedule. What is my fifth schedule? AMTM. Sorry, this is scheduled tribes, tribal areas. Sixth is AMTM. Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. Seventh is union list, state list, concurrent list. जो यूनियन जिन पे लॉ बना सकता है, स्टेट जिन पे कंकरेंट. अब 7th शेड्यूल में जो भी प्रोविजन दिए हुए हैं स्टेट को, वो भी अगर राज्यसभा अप्रूव कर दे बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी,
तो सेंटर जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकता है रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट, 1 साल तक लॉ। कब तक रहेगा? 1 साल तक। इफेक्ट क्या हो जाएगा? जितने भी स्टेट के लॉज हैं, जैसे स्टेट पुलिस के पास है, स्टेट के पास, वो अपना लॉ बना सकते हैं पूरे कंट्री के लिए। इज इट क्लियर? सो दैट इज द पर्पस। नेक्स्ट, आर्टिकल 312, ऑल इंडिया सर्विसेज। जैसे हमने बोला आईएएस आईपीएस ऑल इंडिया है, अब बोले हम बोले आईजीएस, इंडियन जुडिशियल सर्विस, कोई सर्विस नहीं है, ऑल इंडिया नहीं है, स्टेट की होती है। सो यू कैन मेक इट ऑल, व्हाई कैन नॉट इट बी फॉर, हाँ, 312 ऑल इंडिया सर्विसेज? व्हाई डोंट वी हैव इंडियन जुडिशियल सर्विस? जैसे आईएएस आईपीएस सब कुछ सेंटर कंडक्ट करता है, एक ही है, यूपीएससी एक ही बॉडी है ना कि सबका एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करती है। तो व्हाई डोंट वी हैव ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस? हर हर एक स्टेट का जुडिशरी का एग्जाम स्टेट कंडक्ट करता है, नॉट सेंटर गवर्नमेंट। बना सकता है राज्यसभा से, राज्यसभा इज the only one who can legislate for it and make a law. Why don't we have it? Judicial service. Local language. In the courts, you have local language. Now I can be from, now I give the Punjab, I give a Punjab judiciary examination and I'm shifted to Kerala and I'm listening to what people are saying and I'll want to enter colluder every now and then. Or I'm in Tamil Nadu and I'm listening and they're saying, I'm like, what happened? What am I supposed to do with judiciary? So that is why you have judiciary examinations of state itself. Somebody from Kerala coming here and then Punjabi में बात हो रही है, वीर जी ए हो गया, जज साहब बहुत गलत होया मेरे नाल, इन्हें मैंने मारिया कुटिया, the person is like, what the hell is happening? That is why in high courts, generally in high courts, you're allowed to speak the state language, but general preference is given to English. और सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ इंग्लिश ही चलता है. अब judges are coming from every state. Now imagine somebody coming and talking in Tamil. He's thinking, how the judges are thinking, what the hell is he saying? How would they give justice? That is the reason why in Supreme Court, the only language permissible is English. High courts also advise more English. They are allowed to speak a bit in Hindi. They are allowed to speak in local also, generally Hindi, not in any other language. Is it clear? Local courts, what happens? Jolly LLB देखा है ना? Judge साहब मेरे मुक्कल, अब वो बोलेगा मुक्कल and वो he's somebody from Kerala is listening mukkal. He's like क्या हो गया? So there'll be a lot of problems. Somebody from Northeast coming here, big problem for different state languages. So all India services is clear. 312. What is 249? Making list related to state. What's my 8th schedule? Anyone? Official languages. How many official languages do we have? 22. Huh? This came? Simple. Okay. This is the case. Coordination of matters into the state list. This is clear? Okay. Types of parliamentary committees. अब parliament में आगे last ये topic में बहुत question आ रहे हैं. Again something not given. So pay attention. एक होती है ad hoc, एक होती है standing. Ad hoc means for a specific purpose. A committee made for a specific purpose. A very good example is the opposition is now calling for an ad hoc committee for the recent war between India and Pakistan. What is the extent of damage? How we can stop it? It's a committee to be formed. Is it clear or not? So that's an ad hoc committee, जो special purpose हो. एक होता है standing committee, which already has a special purpose, जिसका already purpose defined है. दो types की committee होती है, कौन सी? Ad hoc और standing. Example मैंने दे दिया, इसका example क्या होएगा? अभी war हुआ है, तो कौन सी committee बनेगी? Related to war. Damages caused, how we can prevent it and everything. Standing committee, already the purpose is mentioned for the same. Special committees as executive watchdogs. Okay. First is committee on government insurance, committee of estimates. अब इन सब पे हम बात करेंगे. ये सब committees बहुत important है, आजकल इन पे questions आ रहे हैं. We're going to discuss it. Significance in ये करने की जरूरत नहीं है. अब सीधा बात करते हैं estimates committee. Short points. It was first introduced in the year 1921. लिखो EC. Estimates Committee 1921. John Mithai. These are standing committees. 30 members.
from Lok Sabha. Time 1 year. Fifth, no minister eligible. Short notes I'm making. John Mithai was the one who conceived this committee. 1921 में बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जॉन मिठाई ने कंसीव किया. 30 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के. टाइम 1 ईयर होता है. कोई मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल. रूल्स कैन बी एलिजिबल. ये 5 ना चीजें मेजोरिटी में सेम रहेगा. नो मिनिस्टर्स एलिजिबल. टाइम पीरियड इज 1 ईयर. Who's the case? Is it clear? Every in every committee, there's a minister. Minister has to do his own role. So that's why minister cannot be eligible for these committees. Same for departmental committees, no minister was eligible. How many years? 1 year. How many members were there in departmental? 31. 21 plus 10. Suppose there is if you're a member of any committee and you're told to visit, that's where all the parliamentarians are visiting here and there. बार बार जाते रहते हैं. अभी जितने भी हैं, जैसे अभी कमेटी बनी कि इंडिया वाज टू प्रेजेंट इट्स ओपिनियन to other countries. Shashi Tharoor और ये सब थे. They are traveling to all other parts of the country, of the world. Who is going to pay for it? The government of India pays for it. Their expenses are paid for. Their stay is paid for. Everything. Same way happens in these committees. A very interesting thing was during the Rajya Sabha, when Article 370 was to be passed, what the government did, they said to all the MPs, generally the opposition ones, oh, you should go for a study tour. Every MPs also have study tours to go and read some other parliaments and everything. The majority of the Rajya Sabha MPs of Congress were outside. And in the meantime, the government introduced the Article 370. And they gave 1 day. It was published on 1 day, next day was the voting. So everybody had to come back quickly. So, as I said, if I'm a minister, whip. The whip had said, now, yeah, absolute majority was required. Constitutional amendment. Clear or not? What's a tenure? 1 year. अब इसमें क्या होता है? Originally, ये पढ़ना पड़ेगा because इसमें to report the what economies improvement in organization, efficiency and administrative reforms consistent with policy underlying the estimates can be expected. इसका simple सरल तरीके से इसका ये कैसे है? How can we reduce an expenditure? That's what an estimate committee says. If any budget is presented, उसको किस तरीके से present कर सकते हैं कि efficiency better है? What can be done? So its job is to tell how the government is supposed to present the budget within the limits policy implied, to suggest alternative policy in order to bring an efficiency in economy and administration. किस तरीके से? To suggest the form in which the estimates are to be presented in the parliament. Clear or not? The committee continues to examine the estimates from time to time throughout the financial year and reports to the House the examination. What is estimates? खर्चे. Is it clear? किसके टाइम पे बना? जॉन मिठाई. क्लियर है कि नहीं? ये पढ़ना पड़ेगा. सॉरी, इसमें आएगा which of the following is not true. Already आ चुका है. So day after I'm going to do previous year's questions. I'll show you this exact same. So I cannot change this. इसमें short नहीं लगा सकता. जो 5 चीजें थी हमने कर ली. Next, committee of public undertaking. Public undertaking क्या है? Example, Air India. और पहले थी और क्या है? Who is the richest person in India technically? The richest person in India is he has listed companies everywhere. The president of India has listed company and she is the biggest stakeholders of all companies. Can you give examples of it? Just to name a few companies. लोगों के पास
These are all companies, Coal India and every public listed companies. One company would be worth 20,000 plus crores. All these PSUs. Who's owning all the shareholders? Who's the shareholder? The president. Is it clear? All these are PSUs. Like when we talk about these are PSUs owned by the government of India, is basically in the name of the president. Coal India, everybody knows or not? What is NALCO? National Aluminium Corporation Limited. What is IRFC? Everybody knows. REC knows. Rural Electrification Corporation. IREDA, which gives loans for rural renewable energy. Yes. Example for railway. Can you give me more? IRFC, finance हो गया. IRTC, ticketing one. Is it clear? IRCTC. So it's just like, imagine the companies. I just cannot list it out. So similarly, we'll do in economics, Mini Ratna, Navratna, Maharatna. These are examples of it. Similarly, Oil India, ONGC, BPCL is bigger than a money, technically. Okay, now all the PSUs are working. There is going to be a committee. The parliamentarians are going to look after the working of the PSUs. Of course, they don't look into day-to-day affairs. They are not supposed to interfere. Their only job is to find if there have been any problems with the PSU, the public undertaking, what can be done to improve it. Like say, for example, Indian government decided to sell Air India. Now they're after Tata's. Kya halat hai ye wo. You've been doing this for 60 years. You expect them to take a turnaround in 1 year is not possible. 60 years, Indian government was owning, 70 plus years government was owning Air India. Now, Air India, they saw so much of losses. Another example of a loss-making PSU, big loss-making PSU, BSNL, MTNL. They have, by the way, BSNL has the biggest coverage in India. In rural areas, you will not find internet connection. You will find internet connection of BSNL. Has the biggest connections, has more, but still not doing. Spectrum, they also have to auction, but they have the biggest. But then again, the point is efficiency. So who is going to work? Like if I have to turn around a BSNL, a report comes to me. Suppose, let's put it like this. I'm into the committee of public undertaking. सबसे पहले तो बात करते हैं कैसे करना है. सीपीयू का सबसे पहले क्या आ जाएगा? कृष्णा मेनन. इसके सजेशन पे ये कमेटी बनी थी. कौन सी? The Committee of Public Undertaking. First point. How many members are there? 22. 15 Lok Sabha and 7 Rajya Sabha. Can be a minister be a member? No. Tenure? 1 year. Chairman appointed by Speaker of Lok Sabha only from Lok Sabha. इसका चेयरमैन सिर्फ काम से होता है. बस ये बेसिक पॉइंट्स पहले क्लियर हो गए. दो तो सिंपल रहेंगे. 1 साल मिनिस्टर का भी मेंबर नहीं हो सकता. चेयरमैन कौन बनेगा? लोकसभा से. इसमें टेन्योर इतने मेंबर्स कितने? 22. उसमें कितने थे? 30. Yes, Speaker of Lok Sabha. Speaker is already a member of which committees? Speaker is already the head of Business Advisory, General Purpose, and Rules Committee. Speaker is already the member of functions. Examines reports and of PSUs. वो देखेगा MTNL में पैसा कितना आया. रिपोर्ट आती है, प्लस माइनस सब आता है. Is it clear? How autonomy of the management stays, but you can make better functioning. So it's the role of the MPs who sit with IS officers. They can also call the MTNL head. Bata, why is he not doing? What are you doing to revolutionize? So BSNL offered its employees premature retirement. They said, we'll give you benefits, retire early. Because now it's all automation. Pehle long is the time gone when you required. There used to be 1,000 linemen working. I don't know whether you've seen that time or not. When to get a BSNL number, it used to take 1 month or 2 months.
Not seen that era? Landline era नहीं देखा? So you must be too young at that time. The landline era was a time when a single phone used to take a month to come. A phone getting disconnected, don't expect to turn it up in 1 minute or 2 minutes. It used to take 5-6 hours or more than that. 5-6 minutes. 3-4 दिन तो guaranteed. It's not gonna work. And it had those wire. This guy would fix the wire from the end. There used to be people. Now the somebody advised that we don't require these many employees now because there's no role of it. Because everything became optical. So they started shedding out people. They started kicking out people. Reviews the CAG. What is CAG? Controller Auditor General's report on PSU. It's a profit making. Where is it making profit? If it's a loss making, how is it making losses? Like recently, these companies of India were in big news. BEL, HAL, Cochin, Mazdon. Why were they in news? BDL. Why? All defense stocks. India has gone into Atmanirbhar Bharat. So India is making its own weapons and everything. So no longer, huh? 15 to, should I see, tell you in last 5 years how much? 5 years, 200, 2400%. 2400 rise in because of Atmanirbhar Bharat. Because at the end of the day, we require weapons. So now we are making it by ourselves. Okay. So that's an example. Just now they are the ones who will sit. Now somebody will sit with an HL. Why are we not able to do it? What can you do to procure it? They'll keep on advising and suggestions on how the government can work better. Say, for example, right now, we see that Tejas is not getting made, Mac 1, because our engines are not coming. So they'll report. The CAG gives a report that it's causing this much. Then they discuss it through, evaluates manager principles of autonomy, efficiency, and sound commercial practices, other assigned functions by speaker similar to PSC or estimates committee not under above category. Does not examine the major policy matters or day-to-day administration. Air India disinvestment was talked in 2019. The report first went to Committee of Public Undertaking. किससे बनी? कृष्णा मेनन. कितने members हैं? 22, 57. Who's the head? लोकसभा में से कौन डिसाइड करता है? स्पीकर. इनको रिपोर्ट कौन देता है? CAG. Is that clear? Simple. In what? Yes, main person. Committee on Public Accounts. इसका लीडर होता है ऑपोजिशन है. फर्स्ट इसका लीडर कौन है? ऑपोजिशन. इसको रिपोर्ट कौन देता है? CAG. अगर कोई घोटाला पकड़ना है, यू वांट टू फिक्स आउट अ स्कैम, तो कौन करेगा? कमिटी ऑफ पब्लिक अकाउंट्स. कितने मेंबर्स हैं? सेम 22, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा. Members are not eligible for chairman is from किससे है? Opposition party. जितना भी CAG की रिपोर्ट है इसके बाद जाएगी. CAG की रिपोर्ट में जैसे एक एग्जांपल है आपको, देखो इंडिया में अगर एक रफेल भी गिरा होगा ना, रिपोर्ट जाएगी. बिकॉज इंडिया में नॉट अ सिंगल मनी कैन बी टेकन आउट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. वो बीच में आ रहा था रफेल का पैसा नहीं बताना चाहते, ये नहीं. इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू बाय रफेल्स, वेयर डू यू गो? अब ये तो नहीं बोल सकते हमने रफेल कितने, चलो इंडिया के लोगों को पैसे दे दो. वो तो नहीं कर सकते. तो आप क्या करोगे? यू हैव टू गो टू द पार्लियामेंट. द पार्लियामेंट में ना यू हैव टू गो. मिनिस्ट्री है. आज हमारी मिनिस्ट्री ने बोल दिया, देखो अभी हमारे को पता है 5th जनरेशन इश्यूज आ रहे हैं बिकॉज चाइना बोल रहा है J35 रख लो, पाकिस्तान को बोलता है 50% डिस्काउंट पे रख ले. अब उसके बाद 5th जनरेशन आ जाएगा, चाइना का 5th जनरेशन है, हम क्या करेंगे? तो अब कमिटी आएगी, वो बोलेगी पैसा तो बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज विदाउट दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव. हाउ मेनी स्क्वाड्रन्स डू वी हैव इन एयरफोर्स? General current affairs. How many squadrons do we have?
The sanction strength is 41. We are at 32, which is going further down. Big 21s are phasing out very quickly. Is it clear? हमारे पास बचे ही कुछ नहीं है और minimum strength 30 तो चाहिए उसके बिना तो Air Force would be like done. So now we said we are starting AMCA project. This is the 5th generation. ऐसे ही हमारा एक तेजस का जो प्रोजेक्ट था कब स्टार्ट हुआ था इमेजिन तेजस अभी फर्स्ट MK1 2024 में आया है. It is generally a small jet, very small jet. It's supposed to just, it's not a 5th generation or 4th generation जो MK1 की बात कर रहा हूँ. It is just a very small jet to provide for safe defense rather than attack. It will not be used ever as attack. This time 1984 was the time when we came to existence the project. कब आया फर्स्ट प्लेन? वो भी रो के वो बोले इंजन तो दे दे. सो अभी वो यही चल रहा है कि असेंबली लाइन नहीं है HAL के पास. साल में 6 एयरक्राफ्ट बनाएगा उससे तो फायदा ही क्या है? दैट्स अ प्रॉब्लम. अभी AMCA स्टार्ट कर दिया एडवांस्ड मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2025 में पास किया है. टेक्निकली 2029 में प्रोटोटाइप आएगा, 2035 में डिलीवरी है. और चाइना ऑलरेडी 2025 में किसको दे रहा है? 2035 में तो उनके पास क्या होएगा चाइना के पास, और हम ये लेके बैठे होंगे अभी. पर वो भी कहेंगे आएगा कि नहीं आएगा किसी को नहीं पता. So India is way behind in terms of Air Force as of now. So now what happens is, suppose, as I said again, this is what is going to be discussed in Committee of Public Account. Committee of Public Account क्या है? सरकार ने पैसा लगाया 15,000 करोड़ तो लग गया. CAG की रिपोर्ट आई भाई 15,000 कहीं दिख नहीं रहा. A very good example. What is the role of CAG? हमने बोला 10,000 की रोड्स बनानी है, देखा रोड है ही नहीं. Who is going to flag this? CAG. Independent body. CAG is going to flag it. CAG बोलेगी रोड ही नहीं है. Who is going to pick it up? Because opposition का member head है, he is going to pick up report. वो लेके आएगा CAG report पार्लियामेंट में. कहाँ गया मोदी जी, कहाँ गया पैसा? Is it clear or not? So that is what, like, say for example, अभी बात हुआ था रफेल से. CAG की रिपोर्ट आई कि 2% सस्ता मिला as compared to that. जब वो पिछले रफेल मिले थे 2% सस्ते मिले थे. That's what the CAG report है. So CAG रिपोर्ट बोलती है तो ये ज्यादा हो गया था. जैसे कोल स्कैम तो सबको पता है, कोल और 2G स्कैम बेचारे मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में हुआ था 2G स्कैम. CAG की रिपोर्ट कहती कितना 10 लाख करोड़ का स्कैम है. करोड़, इसके पीछे और जीरोस लगा दो. But the report in the court was given wrong, because what happened at that time, your calling rates were at 40. Remember, जब starting में phone आया था, does anyone remember mobile phones 1 minute calling used to be 40 minutes, 40 rupees per minute. That time I'm talking 20 years back, with that big phone which seems to like a cordless. Yes, with the antenna on top. The calling used to be 40 rupees. Incoming used to be 9 rupees. Incoming. And we're talking 20 years back. Look at the value of money, 40 and 9. So to make it cheaper to people, the auctions were given at a cheaper rate. That's when we started seeing the dip in the prices. Right now, India has the cheapest internet in the world. Also, the reason why the generation is going to worse, it's also this is the case of it. But we have the cheapest internet in the world because the auctions came. But the report the CAG made a report according to what the auctions were sold initially, the 1G. So they said, no, it's too expensive. It's too cheap. So they said this is a scam for it. Who was the head at that time? The opposition leader. He was the head. He brought about this report and started. That's how the entire movement started. India against corruption. There, 2 leaders were also arrested. Which 2 leaders? A. Raja and Kanni Mozi. That time. Kanni Mozi. Met her. She's from Tamil Nadu. Kanni, for us it's ZHO.
So this is Alapuza. How do you pronounce it? How can you pronounce that? Can you spell it out for me? How is D in this? But there's no D in this. Alapuza. That's a pronunciation. Okay, back. So functions. Scrutiny of expenditure ensures that the money granted by the parliament is within the scope of the demand of grants. क्या वो उसी पे खर्चा हुआ है कि examination of documents whether the जैसे मैंने आपको 2G का बताया same way checks government spending verifies efficient and appropriate fund usage post facto accountability खर्चने के बाद हुआ कि नहीं हुआ not concerned with policy focuses on implementation. Coal PSC examined CAG report 2G spectrum was the same thing. Is it clear or not? So what are the two? What is Committee of Public Accounts? Who's the head? Leader of the opposition. How many members? 22, 15 and 7. What is the case? CAG gives the report. He's known as the friend of CAG. Looks into the functioning, whether the money has been spent correctly or not. Second, money जिस purpose के लिए था उसी पे खर्चा गया. उसके बाद whether the work has been delivered or not. That's the rule that has to be done. Next, Committee of Privilege. If, say, for example, when I talk about Committee of Privilege, it is separate both for Lok Sabha and Rajya Sabha. Committee of Privilege is separate for both Lok Sabha and Rajya Sabha. The chairman is appointed by Lok Sabha. The chairman इसको appoint करता है Lok Sabha और Rajya Sabha का कौन है appoint करता है chairman. Nominated members from the House. Members generally are not members. Breach of privilege क्या होता है? If any case you have exceeded your freedom of speech in the parliament, what is committee of privilege? Second, immunity from legal proceedings and right to receive timely information. These three things it will look. How many members are there? Committee of privilege, both Lok Sabha और राज्य सभा का different है. अब पार्लियामेंट में क्या आपने कुछ ऐसा अपशब्द बोले हैं जो करेक्ट नहीं है? Did you stop anybody else from speaking or you spoke something which was incorrect? And are you immune for legal proceedings? A question of privilege is raised if admitted, referred to the committee. Committee examines and submits the reports and house debates and takes action. Notice against members of parliament as Shashi Tharoor. Another case is हमारे chief minister के against हुआ था. Bhagwant Mann. Committee of privilege. He was found to be drinking. He came in the parliament drunk. So the person sitting next to him complained. Then a committee of privilege was formed. So they said, oh, he came drunk. So they were formed. They said for one entire session, you will not be allowed. What does one entire session means? Lok Sabha, कौन से सेशंस होते हैं? Either budget or monsoon or winter. तो बोला एक पूरे सेशन के लिए नहीं ला सकता. But the chief minister, that shows Punjab is any happy state. Okay. So that was the case of it. So is everybody clear? Committee of privilege? Freedom of speech. What are you allowed to do? Similarly, he also posted about the entire process of getting inside the parliament and everything. So somebody said he's breached a privilege in the sense he's given the security of the parliament away. That's another privilege here. The same case. Yes. We don't make one mistake, we make many mistakes. There was also a report of him getting drunk on a flight, and he was coming back from Germany, he was drunk and he fell off the stairs. That's a report. Okay. Committee on absence of members from the sitting of the House. ये हुआ था गोविंदा रेखा दोनों के against. They were not present in the House. So how many days छुट्टी am I allowed? I have to attend the parliament more than 60 plus days holiday I cannot allow. If I'm supposed to have it more, I have to give a letter to the presiding officer. This is the reason why I cannot come. So this is an example of, it was against Govinda also and against Rekha. Both were made members, Govinda in Lok Sabha and Rekha in Rajya Sabha did not attend session for more than 60 plus days. So then this MP, they asked, no, if you're an MP, you're supposed to represent somebody, you're supposed to ask questions, you're supposed to participate in the lawmaking process. You're given a big responsibility. So it is constituted by Lok Sabha in case Rajya Sabha leader, chairperson appointed from among its members. Functions. Consider leave application submitted. क्या वो सही है कि नहीं?
examines absence without permission. He's not taken permission, he's been absent. Recommends action to be taken, whether उसकी सीट ही हटा दी जाए. If you're not coming, if you're not serious being an MP, आपको हटा देगा. Procedure क्या है? 60+ days की छुट्टी होती है. Facts. Example किसका था? MP's actor partition. Okay. Who's the person? For Govinda. It happened. Same for Rekha. Committee on Subordinate Legislation. Yes, I hear. This is a very interesting committee. Both houses of the parliament constitute the committee. 15 members each of Lok Sabha and Rajya Sabha. ये जहां पे लोक सभा और राज्य सभा के equivalent members याद रखो. Only committee जहां पे लोक सभा और राज्य सभा के members सेम है वो कौन से? Committee on Subordinate Legislation. Chairperson is appointed by the Speaker of Lok Sabha और Chairman of Rajya Sabha. अगर Speaker नहीं appoint करेगा तो कौन करेगा? राज्य सभा. Ministers are not a member. ये तो रहेगा. कितने साल के लिए रहेगी कमेटी? 1 year. Privilege also 1 year. Committee of absence 1 year. Is it clear? Next. Every committee members change. Executive formulates rules, regulation based on enabling acts laid before Parliament for a certain period of time. Committee examines legality, necessity, consistency, compliance. What is it? Committee of Subordinate Legislation. जो लॉ बना है, एग्जीक्यूटिव ने जो लॉज बनाए हैं, लॉ से लेके क्या वो लीगल हैं, टेनेबल हैं, मतलब कि इन राइट टर्म्स, इज इट करेक्ट और नॉट, कौन चेक करेगा? कमिटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. बेस्ट एग्जांपल है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया. एग्जामिन वेदर द रूल्स ऑफ एमिशन स्टैंडर्ड्स वर करेक्ट और नॉट. क्या हम अभी तक पहुंच भी सकते हैं इन पे? आपने बोल तो दिया BS5 के और एग्जांपल BS6 बोल दिया हर किसी को. व्हाट अबाउट अदर व्हीकल्स? जैसे व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी आया, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू इट? इज इट लीगल? किसी को आप मना कर सकते हैं एकदम से नहीं करना आपने? So they will check into whether the laws are correctly or not. Motor Vehicle Act reviewed unauthorized provisions. Unauthorized provisions क्या थे? उन्होंने बोल दिया कि there was one thing. If you're not carrying, पहले होता ना, if you're not carrying your, what do you call it, RC or anything, चालान can happen. TAC का तो है, pollution का तो है, रिन्यू कराना पड़ता है ना. तो if you're not carrying it, तो इसमें क्या था? If you're not carrying it, there used to be चालान, but इसको amend करके क्या कर दिया था? What is that thing that we have? DigiLocker. If in DigiLocker you have the facility with you, then what you can do? You can use the DigiLocker for the same purposes. Only in Delhi. Only in Delhi. That was a NGT ruling by the government, by the Supreme Court, not by the government. The Supreme Court said, what the government is not taking anything, what we're going to do? So we're going to make a law by which we will make sure that this doesn't happen. Okay. Committee of Subordinate, clear है कि नहीं? What is Committee of Subordinate? कोई भी law pass हो जाए, if you think the law, any law made by the executive to further subordinate it, whether it is within the framework or not, उसको क्या बोलेंगे? Committee of Subordinate. Next, Committee on Petitions. Petitions mean what people have sent. They say, okay, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो होता है Committee of Petitions. Separate committees in both Lok Sabha and members appointed by Speaker, Chairperson from its members. Members are not, ये तो सेम रहेगा. ये सब क्या रहता है? सेम. ये बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं. कितने साल के लिए होता है? अगर लोकसभा का है तो कौन हेड बनाएगा? स्पीकर. अगर राज्यसभा का है तो कौन हेड बनाएगा? चेयरमैन. Is it clear or not? Members appointed. Chairperson considered from amongst its members. Functions. Considers petition submitted to the House. Examines representation memorials letters. अब एग्जाम्पल आया किसी ने, देयर आर सो मेनी टाइम जब हम वो देखते हैं ना कि फॉर्मर भारत रत्न वाले, उन्होंने अपना भारत रत्न वापस कर दिया बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट रीजन. ये सब किस में जाएगा? कमिटी ऑफ, इट गोज टू कमिटी ऑफ पिटिशंस टू चेक इनटू द डिमांड्स. क्या उनकी डिमांड सही भी है या गलत. सो इट इज हाउ द पब्लिक कैन ऑटोमेटिकली रीच द पार्लियामेंट दिस वे. बनाया तो बहुत अच्छा है. पार्लियामेंट में जो ये लॉज वगैरह लिखे गए थे, हर चीज के लिए इस करके बताएगा कि कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए.
So if you have anything, like say for example, I feel a law is basically encroaching upon my rights, तो मैं क्या जाऊंगा? Committee of Petitions. I'll give an appeal. So then they will call the referent ministry. What is your take on it? तुम्हारा क्या चल रहा है? Generally क्या है? Opposition is always looking for issues, and if it is able to find issues, it is going to push it more. Is it clear or not? A very good example is जैसे one rank one pension इतनी देर बाद है. What is one rank one pension? Anyone? What is O1 ORORP? What is one rank one pension? Anyone? क्या होता है one rank one pension? कोई बता सकता है? हाँ बताओ. What is one rank one pension? Let me give an example. My grandfather retired as a lieutenant colonel. He retired in 70. No, he retired in 60. So he was alive till 2004. But his pension that he used to get was sorry? No, why? I'll tell you. Till the time he was living. Earlier, because the day you were commissioned and when you retired, you would get the pension the day you retire, half of it. And you will not change. So it will remain this. But somebody who retires in 2004 will get, say for example, 30K. No, 2004 was also very less. It was around 15K. But look at the difference. So that's what one rank, one pension is. So when the pay commission started coming, now it is one rank, one pension is applicable. It's everywhere. So they were fighting for this reasons. And this privilege, just you'll remember it from very simple. Committee of Petitions. This petition was sent in to Committee of Petitions where this was discussed in detail. Is it clear? Yeah, you also give DA. They also give you DA. Every year, okay, every year DA is added up. Now, when this 8th pay commission comes, DA gets cancelled. You get a new salary bracket. Then every year DA starts getting added up. That's how it happens. According to this, your starting salary should be 170, 180. 160, no, 140 now. According to the new pay commission. That's what this is. But then DA is not going to be given. Then DA comes up after some years. For the first, I think so, first 5 years you don't get DA. That's what the rule is. When the new pay commission comes. Everybody clear? So what is this committee known as? Committee of Petitions. Everybody clear with this? What is this called? Committee of Petitions. Referral by Speaker Chairman to the committee. Committees examines in delay. Example was this. Significance act as a bridge between citizens and Parliament. So if you have any petition or you feel anything that is related to public can be sent, you will send it to Committee of Petitions. Any doubts? Committee of Government Assurances. ये भी चेक रखने के लिए, as the name suggests, Committee of Government Assurances. क्या गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे, have they done it or not? Identifying assurances, promises, undertaking as by the minister on the floor of the seeks updates on implementation status from concerns ministries. हम इतनी सड़कें बना देंगे, इतने आ जाएंगे. How many members are there? 15. Are members eligible? No. Ministers are not eligible. How many years? Who chooses the chairman? Lok Sabha Speaker. In Rajya Sabha, who chooses? Chairman. That's it. Simple. Evaluates timelines, checks if the assurances are fulfilled within visible time frame. Ministers make assurances, promises during debates, questions, and statements. Assurances are complied by, verified by the committee secretary. ये बहुत important है. Assurances are compiled and verified by committee secretariats. मैंने बोला कब तक, but like say for example, I'm an MP, I go and ask, sir, you've said that in Chandigarh you'll be getting 2 Namo Bharat trains.
he says on the floor of the house, within 6 months it's coming. We are making this project and it will be connected. Who is going to keep a check? Because who is making the minister does not answer by himself. Who is making the minister's answers? Committee secretary. He will now go and give it to the committee that he said this. Now, after 6 months, the committee will check whether the assurances have been done or. But if the parliament was actually, if I said to you very clearly, if India was working according to the procedures followed, it is a very wonderful checks and balances we have in this. So anything which is not happening right can be checked out. Ensures ministerial accountability, promotes transparency in executive functioning, acts as a watchdog of verbal commitments made in parliament, prevents empty, social, politically motivated statements. Is it clear? That's the case. Committee of private member bills and resolutions. Private member bill कौन सा होता है? Example, last one. So it exists only in Lok Sabha. First, most important, Lok Sabha, how many members? 15. Deputy Speaker of Lok Sabha is the chairman. Who's the chairman? Because private member is generally introduced by the opposition party. If I'm in the government, why would I'll tell the government I want this bill, so they'll try introducing it. Is it clear? So it's very simple. When we talk about private member bill, who introduces it? Who's the chairman? Deputy chairman. Secondly, how many members? 15, only for Lok Sabha. Private members give notice of intention of introduction of bill of resolution. Committee reviews the bill, especially if amendments to the constitution or raise questions of legislative competence. फर्स्ट रीडिंग होगी, किसके पास चले जाएगा? कमेटी के पास. कमेटी इसको रीड करेगी, जो मैंने बताया था. फर्स्ट रीडिंग के बाद कहाँ पे जाएगा? कमेटी. गजट के बाद छपेगा. That's it. Recommends time slots and priority of business. Reports submitted to the speaker. लोक सभा follows schedule advised by the committee. वो बोलेंगे कि हमने कमेटी ने एग्जामिन कर लिया, ये बिल ठीक है, लेजिस्लेटिवली ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है. स्पीकर को बोल देंगे आप इस दिन फ्राइडे को. और ऑल्सो एक और चीज, प्राइवेट मेंबर बिल कब इंट्रोड्यूस होता है? ओनली ऑन अ Friday. Which was the 221 private member bill proposing uniform civil code but still referred to committee. इन्होंने रखा है प्रोसेस कि फ्राइडे को ही होएगा. मंडे टू थर्सडे गवर्नमेंट बिल्स. इन्होंने प्रोसीजर रखा है प्राइवेट मेंबर बिल ओनली कम ऑन अ फ्राइडे. Ensures active participation of non-ministers has said private bill on right to privilege debated after recommendation of the committee. The right to transgender person bill was a private member bill passed in decades, which has been passed through committee. It was the last bill ever to be passed. ये पूछ सकते हैं. Private member bill कौन सा था? Right to transgenders. Yes. Opposition. There is no deputy speaker even now. Mallikarjun Kharge very recently said to the Prime Minister, generally by every third, first, what's the election of speaker article? 83 or 82? 83, I think so. Election of speaker is given by article 83. One second. '93. Yes. Election of speaker is 93. So very clearly what is given in election of speaker, the very first session, that of Lok Sabha, which takes place, the election of speaker will take place along with deputy speaker. But till now, last Lok Sabha had no deputy speaker because there was no opposition. But this time they have, still no deputy speaker is chosen. It is given in the constitution. संविधान में कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव होना चाहिए. अभी तक नहीं कराया गया. ओके, नेक्स्ट कम्स रूल्स कमेटी. रूल्स कमेटी का हेड कौन होता है? स्पीकर. बताया था 3 चीजों का स्पीकर ऑटोमेटिकली हेड होता है. जनरल पर्पस, रूल्स, और क्या होता है? बिजनेस एडवाइजरी. रिव्यूज मैटर्स रिलेटेड रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस. कैसे करना है, पहली किस चीज को ऊपर रखना है. लाइक अ वेरी एग्जांपल, रूल्स कमेटी ने डिसाइड किया कोविड टाइम पे there'll be no question hour, there'll be only 0 hours. So the committee said, since COVID we don't want MPs to stay for a long period of time, so we'll have no this. Is it clear? Suggest amendments to the rules, recommends modification, additions or deletion to the rule book. क्योंकि कोविड में टाइम में क्या कर दिया,
क्वेश्चन आर ही खत्म कर दिया. So किसने किया? कमेटी ऑफ, who's the head of committee of rules? Speaker. In Rajya Sabha, codifies new parliament practices. If new practices evolve, the committee may propose their formal inclusion in the rule book. वो बोलता नहीं है रूल बुक में ये लिखा है, उसका मतलब ये होता है कि भाई ऐसे ही चलेंगे. पहले अगर किसी को एडजर्नमेंट करना है तो कितने लोगों के सिग्नेचर चाहिए? 50. 50 साइन करेंगे, स्पीकर को देंगे, बोलेंगे हमें तो चाहिए. अब तो डिस्कशन करा, कब कराएगा वो तेरी मर्जी. इज दैट क्लियर? सो देयर रूल्स मेंशन जो आपको करना पड़ेगा. सिमिलरली, when the prime minister or the leader of the house is speaking, the leader of opposition does not speak. When the leader of opposition is speaking, the leader of the house does not speak. ये rules होते हैं. Certain things which you have to do. Is it clear? Significance maintains discipline, so and so. ये सब हो गया. Powers and function of speakers we've already done. So that does with this thing. Everybody clear? Okay. Any other topic? And Tuesday, just go through it. By this on Tuesday, I'm going to take up PYQs. I'm telling you what I'm doing on Tuesday. Rather than English, I'll be doing the following topics with you and finishing it up for you. On a Tuesday, you have PYQs and all are world bodies. When I say world bodies, what are we going to discuss? NATO, FTF, BIMSTEC, all these have come in the recent terms. There's going to be guaranteed question. There is UNGC, there is COP, there is going to be, who's the UNICEF, WHO, then there is SARC, United Nations Convention on Climate Change. Yes, sub, including the questions from the last 3 to 4 years. That's what I'm going to finish off. तो उससे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे. So that ways we are able to understand what type of questions come and what we are going to do. And all this I will take approximately, I think so it should take 3 days maximum, but it will cover up all your. Is it clear? That would be the case of it. Any doubts with this now?